That means I bow my head in the reverence of Goddess Saraswati, who bestows upon us the fearlessness of life in the form of knowledge and intelligence. संविधान दिवस के शुभ अवसर पर मैं यूपीएसआईएफएस के डायरेक्टर डॉक्टर जी.के. गोस्वामी जी से निवेदन करूंगा कि वह मंचासीन अतिथियों से दीप प्रज्वलित कराने की कृपा करें। तत्पश्चात मां सरस्वती का नमन करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः एषुतार्यामः नाड्यान्धकारावः हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधत् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। जोरदार तालियां। Our esteemed guests for leading this auspicious beginning. I request everyone get ready for the national song. Just now. I request Dr. Sapna Sharma, faculty at UPSIFS, to kindly lead us for preamble pledge.
उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति सादर आग्रह करूंगी आप सभी संविधान दिवस अपने अपने हो जाए दाहिना हाथ आगे करें। अब भारत के लोग अब आगे भारत को एक संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय चार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए संकल्प लेते हैं। जय हिंद। धन्यवाद। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। Now, I would like to call upon the stage Vani Mishra, B.Sc. M.Sc. integrated at UPSIFS, present sapling as the token of respect as well as memento to our Chief Guest, Honorable Justice A.R. Masoodi, Lucknow Bench, High Court, Allahabad. Now, I would like to call Asta Singh from PG Diploma in Ballistics of UPSIFS to present sapling to our guest of honor, Honorable Justice Rajiv Singh, Lucknow Bench, High Court, Allahabad. I would call upon Rudraksh Yadav, B.Sc. M.Sc. integrated at UPSIFS to present a sapling to our guest of honor, the Director General of Police, Training of UP Police, Srimati Renuka Mishra. Now, I would like to call Alok Singh, PG Diploma in DNA of UPSIFS to present sapling to our keynote speaker, Professor Anup Surendranath from National University, Delhi. I would like to call upon Shrankla Manik, PG Diploma in DNA of UPSIFS to present a sapling to our guest of honor, CEO and founder of Upbuild Global Incorporation, Dr. Upendra Giri. Now, I would like to call Aditi Sharma, BSc MSc Integrated of UPSIFS to present sapling to our guest of honor, Mr. A.V. Rajamouli, IAS. Now, Prachi Tripathi, PG Diploma in DNA of UPSIFS to present sapling to Additional Director General of Police, Director of UPSIFS, Dr. G.K. Goswami. Dr. G.K. Goswami, our beloved director, UPSIFS, is a blend of well-decorated bureaucrat and an academician. He's 1997 batch IPS officer, having served in various districts as police chief, joint director in CBI, and served with UNODC. Last year, he visited Cornell University, USA, as a Fulbright fellow. He's an avid writer, having published dozens of books and articles. Recently, he coined various terms like forensic aid. I request him to introduce the institute and the topic.
Namaskar, and I welcome you as the founder director of this institute on behalf of the government and the police department as well as this esteemed institution. This is our prime privilege to invite you, and this is our first attempt actually to celebrate such a large gathering for an occasion which is the best probably being the Constitution Day. Nothing can be better than to pledge ourselves for the cause of nation. I am very happy that on my simple request, honorable judges, the very renowned experts of their field sitting on dais, various names I can cite, Honorable District Judge Sahab, various other dignitaries of the city, not only from the academia, but from various other fields, the people are here. I am so delighted to welcome you all, sir, MM. This is our first attempt, as I mentioned, and we have tried that everything should be done by our own students. So, in the beginning itself, I beg pardon if any mistake we commit in organizing or making something which may be little odd, but because it is our first attempt and the children are very happy to participate and to welcome you all, sir. इस संस्थान की शुरुआत, इस संस्थान का शिलान्यास 1 अगस्त 2021 को भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा बहुत सारे गणमान्य लोगों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनके द्वारा 1 अगस्त 2021 को किया गया था। और मुझे ये बहुत कहने में बहुत हर्ष है कि लगभग 2 वर्ष के कार्यकाल में, 2 वर्ष की समय अवधि में इतना बड़ा इंस्टीट्यूट तैयार किया गया, जो अपने आप में एक उपलब्धि है। अब तक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगभग 300 करोड़ से अधिक की इसमें धनराशि व्यय हो चुकी है और ये इंस्टीट्यूट कानपुर रोड पर अमोसी एयरपोर्ट से लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर ऑन रोड है, कि बहुत अच्छी लोकेशन है। और अगला फंक्शन निश्चित रूप से हम अपने संस्थान में करेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो ऑडिटोरियम है वो जल्दी तैयार हो जाएगा, तो मैं सभी को एक बार पुनः जल्दी वहां पर भी बुलाऊंगा। इस संस्थान के लिए जो हमारा भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का ये एक स्वप्न है कि इसको विश्व स्तरीय बनाया जाए, जिसके लिए हम सभी लोग कटिबद्ध हैं। दिस इंस्टीट्यूट हैज ए यूनिक फीचर and I can mention that it has 3 verticals. Normally, I have got opportunity to visit various countries, various institutions during my UN stint of foreign deputation as well as a Fulbright fellow, and I have seen a lot of institutions, including police training institution, forensic science, educational institutions. But I can vouch and I can proudly say that this institute has 3 verticals. First is the crime scene management. How the crime scene should be managed so that there should be no tampering. The another one is the best accredited analysis of the samples, so that there should be no hanky-panky, no junk science, and it should be as transparent as it is expected by the Honorable Court. The third, which is the unique one, is how to translate expert opinion into credible evidence. And this is the forte of this institute. And I can say with pride that no other institution across the globe has thought this way, that how expert opinion can be translated into credible evidence. And we are committed doing it. And how we are doing it, I just tell you in 1 or 2 lines. Basically, forensic science, until unless it is blended with law, it cannot be complete. And this is the first institute which has thought in this way, that legal study will couple with forensic science. And we are next year, we are introducing again the very first in the world. One course that is BSc Forensic Science
LLB 5-year integrated course. We are almost in the final phase of having MOU with various renowned and prestigious institutes, not only in India, but across the globe. Few of them I cite: IIT Kanpur, which is basically our mentor, and our students of cybersecurity are being blessed, being taught by the best expert of IIT Kanpur and many other institutions. Then we are in the final phase to have MOU with CDFD Hyderabad, IIM Lucknow, IITR Lucknow, and Tata Institute of Social Science, and the list is very long. मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि अभी फोरेंसिक साइंस की डेवलपमेंट कितनी डिमांड करता है और कुछ करने के लिए। छोटा सा मैं एक उदाहरण के तौर पे आपके सामने पेश करना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ आज बहुत बड़ी डिग्निटरीज हैं, हमारे ऑनरेबल जजेस हैं, एकेडमिशियन हैं, हमारे क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति हैं, तो इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता इस फील्ड को समझने के लिए। जब हम इस संस्थान का नामकरण कर रहे थे, नामकरण पहले हो चुका था, लेकिन हिंदी बनाने के लिए जब हमने प्रयास किया, तो जो फोरेंसिक साइंस शब्द है, इसके लिए नॉर्मली जो हम शब्द यूज करते हैं हिंदी में, उसका है न्यायालिक, और अगर न्यायालिक की आप ट्रांसलेशन करें तो वो होगा जुडिशियल। शायद जुडिशियल शब्द फोरेंसिक साइंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से दूसरा शब्द है न्यायिक। न्यायिक भी अगर बात करें तो न्यायिक भी जुडिशियल के ही आसपास है। इसी तरीके से विधिक विज्ञान भी बोल देते हैं कहीं कहीं। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है साथियों कि अभी इस विज्ञान को ग्रो करने के बहुत स्कोप है, और उसी के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। एक और जो हमारा क्षेत्र है इसको बढ़ाने के लिए, वो है कि हम किस तरीके से इस विज्ञान को केवल कोर्ट रूम तक सीमित ना रखें, उसको किस तरीके से इंडस्ट्री के साथ बढ़ाएं, इंडस्ट्री के साथ कैसे हम उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें और कैसे हम उनके बेहतर सोल्यूशन दें। क्योंकि फोरेंसिक साइंस को अगर आम आदमी की भाषा में बताया जाए तो फोरेंसिक साइंस है क्या, ये बात समझने की है। फोरेंसिक साइंस किसी भी प्रक्रिया को, चाहे वो कोर्ट रूम प्रक्रिया हो या कोई भी प्रोसेस हो, उसकी वैलिडिटी बनाता है, उसकी वैलिडिटी को सिद्ध करता है। इफ आई से दैट A plus B is C, how it is 2 plus 2, how it becomes 4. So this is basically nothing but forensic explanation. So forensic is basically directly related to the probity of any fact, and this can be utilized, and we are trying to exploit this very premise of forensic science for our purpose. So with this background, let me just introduce, although there are so many dignitaries sitting on the dais to talk about the topic which we are deliberating today, but I'm happy to say that this term, not only this term, but few other terms including forensic aid, has been recently coined by us, and I am happy to say that this term is getting quite good popularity. The another term which we have introduced and has been recently published, and sir, you have the paper also in your folder, and other dignitaries also have that folder in you recently published in SEC. Basically, another term which I want to ponder is community forensics. Until unless we bring forensics to the doorstep of people to whom we want to serve, it will be incomplete. It should not be within the boundary of laboratories, not within the boundaries of academia. It has to be brought to the downline, the people who want to use. अगर मैं अपने दिन याद करूं, जब मैं पुलिस की एक्टिव पुलिसिंग में था, तो लोग जनरली अगर किसी रिक्शे वाले का भी फोन खो जाता था तो वो कहता था कि साहब इसका आप सर्विलांस करा दो, तो सर्विलांस पर उसको पता चल गया। जब तक हमारे लोगों को यह पता नहीं चलेगा कि डीएनए ऐसी सशक्त विधा है जिससे अगर हम दोषी को सिद्ध कर सकते हैं तो हम निर्दोष को भी सिद्ध कर सकते हैं। और इस विधा की सबसे खास बात यह है कि फोरेंसिक साइंस एक न्यूट्रल साक्ष्य पैदा करती है। वो कभी भी पीडब्ल्यू नहीं है, ना डीडब्ल्यू है। पीडब्ल्यू का मतलब प्रोसिक्यूशन विटनेस, ना वो प्रोसिक्यूशन की साइड लेगी ना वो डिफेंस की साइड लेगी, वो सत्यता की साइड लेगी। और इसीलिए हमने जो हमारा लोगो अगर आप देखेंगे तो हमने जो 3 टर्म उसमें दी हैं, एक है सबसे टॉप पे है हमारा जस्टिस, उसके बाद है ट्रुथ, और तीसरा है एविडेंस। साथियों, जब हमें दुनिया में अगर केवल एक ट्रेट अगर पूछा जाए ह्यूमन राइट क्या है, वो जस्टिस है। क्योंकि सभी जितने भी विवाद होते हैं वो केवल और केवल इस परिभाषा के साथ होते हैं, इस परिवेश के साथ होते हैं कि व्यक्ति को यह लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ, और यही सारे विवादों का जड़ है।
तो अगर हमें अन्याय से बचना है तो हमें यह जानना होगा कि न्याय क्या है, हम न्याय कैसे करें। न्याय को पाने के लिए जब हमारे ऑनरेबल जजेस कोर्ट में बैठते हैं तो वो क्या ढूंढते हैं? सत्य। किसी भी तथ्य के पीछे सत्य क्या है, और उस सत्य को पाने के लिए चूंकि जो जस्टिस है और जो हमारा ट्रुथ है वो दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट हैं, उनको मूर्त रूप कौन देता है? एविडेंस देता है। तो जब तक आपकी क्वालिटी नहीं होगी एविडेंस की, तब तक कोई भी कितना ही बड़े आप कोर्ट में चले जाइए, तब तक आपको सही मायनों में न्याय नहीं मिल सकता। देयर आर ऑलवेज चांसेस ऑफ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। सो द क्वालिटी ऑफ एविडेंस is the real test of your quality of justice. Otherwise, in the name of justice, you may get injustice. I quote Justice Brennan, nothing rankle more in the human heart than a brooding sense of injustice. So injustice remains a big challenge for any good governing society. Now let me just introduce a little bit about forensic aid coupled with legal aid. If we go back to the legal aid, the historical perspective, although respective dignitaries are there, basically legal aid was initiated since couple of decades as a charity. But if we see the UK development, then in 1949, the first legal aid act was formulated. And so was in United Nations in 1967. If we see the development of our country, we should feel proud of many things in the legal history of our nation. There are so many things to cite. But in 1883, as long as more than now around 150 years back, Justice Mahmood, who was a very shining judge at that point of time of Allahabad High Court, he refused to hear one case saying that if there is no defense lawyer, then I will not entertain this case. That means right to legal person or right to advocate was addressed in our country as long as 150 years back. And then we introduce our act for legal aid in 1987, where we developed National Law Authority, NALSA, then state level SALSA, and then district level DALSA. And in other than the parliamentary formulation of law, the immense contribution of Supreme Court need to be highlighted. Although the time is little, but I must mention the two names which we should feel proud. Is one Justice Krishna here in this field, and another doyen of law is basically Justice P.N. Bhagwati. And just I cite the case, 2-3 cases. One is Hussain Ara Khatun case, the famous of 1979. Then you must be remembering Bhagalpur blind case of 1981. The name was Khatri versus Bihar. And of course, Hoskat, the law student may never forget this case, Hoskat versus Maharashtra, State of Maharashtra. Another very important. Top of it, very recently in 2018, one another case where the quality of legal aid has been dealt with by our Honorable Supreme Court in Anokhilal versus State of Maharashtra in 2018. And I request those who are the legal student must read this judgment thoroughly. Then how this forensic aid connects? This forensic aid connects that it proved not only guilt, but it proved innocence also. And I cite one case, very old, called Campden Town case of England, as old as 1661. A person called Harrison went to collect rent of his home in the evening. He was about 70-year-old, could not come back. Little late, the worried wife sent his 12-year-old servant to search the old man. He did not turn up also. Cutting the story short, in the evening, when they found two clothes, one was a scarf and another was hat having some red color. As usual, the police suspect that this boy has killed the man. Ultimately, he at age 12, his brother aged 14 and mother, they were both held guilty
and they were being hanged. Right? And then after 1.5 years, the gentleman came back. Just imagine. And it is not the first case. There are thousand and thousand cases. And I got opportunity last year to meet and discuss for 12 people, those who were in death row. And when you listen them, their stories, they are heart-wrenching. How the law operates. In these type of hall, we never understand how the reality of execution of law. When the people who actually suffer, when you talk with them, then only you realize what are the nonsense in the name of law and legal proceedings. So we should understand the real dynamics and nuances of the execution of law. So what this forensic aid can do, it can bring justice. It is not dependent on any oral testimony who can be a liar, who can change the mind, who can be a hostile person. So it is a neutral thing. But the silver line or the underlying point here is that we should not blindly follow it. It has to be, there should not be any junk science. And now I don't want to touch upon the Innocence project because one another doyen is sitting here, the keynote speaker. Let me just tell about him. He is not only a professor, because I learned more about him when I was in US. A lot of people ask, have you met Professor Anup? I have met him earlier, but I never realized that what the quality of this gentleman. He has done a wonderful work, and I don't touch upon much on this point, leaving things for him to introduce the topic. With this, I again welcome you all, sir, and giving me this opportunity to patiently hearing. Thank you very much once again. Thank you very much, sir, for your kind and visionary words. Professor Anup Surendranath did his PhD and BCL with distinction from University of Oxford, UK. Currently, he is a professor of law with National Law University, Delhi. He is also executive director of Project 39A, which say equal justice and equal opportunity by removing economic and social barriers. His involvement with the death penalty in India began in May 2013 by establishing and leading death penalty research project that culminated in Death Penalty India report. I would request Professor Anup Surendranath to deliver the keynote address. Please, sir. Good morning, everyone. Thank you so much, Dr. Goswami, for having me here today, and also very grateful and humbled to share the dais with the dignitaries on stage. For an academic like me, this is an intimidating setting because one also has to prove one's credentials that one is not just an academic, but one is also involved in the realities of the practice of law. On Dr. Goswami's prompting, I will just tell you what work I do apart from teaching at National University Delhi, which might be necessary for you to just pay a little more attention to what I have to say. I, of course, teach criminal law and the law of evidence at the National University Delhi. I also head Project 39A at the university, which is a criminal justice program. A big chunk of work that we do is provide pro bono legal representation to prisoners sentenced to death across India in the Supreme Court and in the various high courts, and also under trial legal representation in Pune and Nagpur districts, along with a lot of research on forensics, on mental health and criminal justice, on prevention of torture and sentencing. So it's a mix of actual practice and research that we do. We currently represent about 70% of all death row cases in the Supreme Court. And in all our cases, we're very clear that the arguments are not just that the death sentence should not be given. It is a proper pro bono criminal defense. We seriously look at the evidence that is there in these cases. And we are, of course, supported by a very generous set of senior counsels who appear for us pro bono in the Supreme Court, and we brief them
So it's a rather unique experiment in an Indian law school. And of course, we're grateful for the support that the National University Delhi has given us over the many years in allowing us to do this wide range of cases. Our research has been cited by the Supreme Court, by parliamentary debates, by the United Nations Secretary General, and our work has been increasingly being recognized in the Supreme Court. And the reason to say all this really is to tell you that my comments today on forensic aid and forensic evidence comes from that experience of having represented so many death row prisoners. Our track record is that, I mean, I don't know, I just seem like I need to put these credentials before I speak to you about what I have to say. We've won the acquittals of 20 death row prisoners, so from death row to acquittal, right? That's in our system. I think and I think that's much credit to, of course, the kind of competence we have internally, the senior counsels who appeared for us, and also the judges in the courts who have been willing, even after 2 courts have confirmed not only conviction but also the death sentence, to relook at the evidence and uphold the rule of law. Despite that some of these crimes are extremely heinous, they have gone by what the evidence is telling them. And then I think that's something to say about the system that is willing to do that and acquit almost 20 people after the 2 courts have given them the death sentence, right? So and this work is not easy in our system. In many of how and what I want you to remember, and as Dr. Goswami was saying, these are people. There is no rich person on death row, right? You need to know that there is no rich person gets on death row. They are all extremely poor, right? There are very serious concerns with the legal representation that they have received. And this is not even, I'm not talking about legal aid only. Even if many of them have private legal representation, the quality of that legal representation often leaves a lot to be desired. So you're trying to undo what much of it should have been done in the courts below. You're trying to undo it in the Supreme Court. And I think the lack of access to expertise, the lack of access to quality legal representation often is a very, very big impediment. And if we are truly committed to access to justice and the rule of law, we have to think about how can we achieve this equitable access, right? So having given that context to my work, I want to start with some data on the issue of should we worry about wrongful convictions in this country, right? You will, in the last 4 years, the Supreme Court has acquitted 30% of all death row prisoners. The Supreme Court has acquitted 30% of all death row prisoners, right? It has commuted the death sentence for 50% of them. And the confirmation of these death sentences are very low, right? As far as Uttar Pradesh is concerned, the data for the last 11 years, 2012 to 2023, is as follows. Uttar Pradesh has given 223 death sentences in the last 11 years in 148 cases. 43% of that, 43% of 223 death sentences have resulted in acquittals in the appellate courts, right? So I think that's not. This is not to say that number is true only of Uttar Pradesh. I'm citing that number only because I'm here. If I was speaking in Hyderabad or I was speaking in Trivandrum, I would cite the statistics for Kerala or Andhra Pradesh, and the number is pretty much the same, right? The acquittal rates are hovering in death sentence cases. This is when courts have convicted and given death, the acquittals are hovering around 40%. And as a legal system, that should worry us, right? Why is it that we are moving from one end of the spectrum to the completely other end of the spectrum in such a large number of cases, right? And it begs the question, right? How many more are we not catching?
it also raises the question, in these 40% cases, those crimes have gone unaccounted for. Correct? That is also other side of the coin. On one side of the coin, you have convicted people either because they're innocent or the evidence was not good enough. That is an injustice on its own. On the other side of the coin is that who is to pay for those crimes? Nobody has been held accountable for those crimes. And that is my large theme of what I'm going to talk today, that forensics and forensic aid is an issue that concerns all stakeholders equally, be it investigators, be it prosecution, be it defense, and be it the judiciary, and be it prisoners, or be it victims or their families. And we all are equally and should be equally invested in proper forensics. And that is going to be the theme of my talk today. How do we do forensics properly? And I want to tell you that story of doing proper forensics. And I'm going to uh, uh, take you through three stories and try and make the point broadly that we need to think about forensics in a manner that it is scientific, that there is foundational validity to the forensics that we do, and that it is scientifically valid, right? And I will show you why these are very serious concerns in the practice of forensics in India, and also the law in the Indian Evidence Act, read with the CRPC, the Criminal Procedure Code, and where we should go with this, sort of tying in with the great idea that Dr. Goswami has of forensic aid, and why that might be critical to doing valid forensics. So please do not misunderstand me during the course of my comments as saying that I'm skeptical of forensics. Not at all. I am making a case for stronger forensics, for better forensics, for valid forensics, right? That scientific validity of the different forensics methods is absolutely critical. And both in practice and in our law, we struggle to bring in this notion of scientific validity of forensics methods. And I'll comment on that during the course of my comments, right? The first case I want to tell you, and I'm going to tell you three cases that we have done or we are doing, and I have on purpose avoided cases from Uttar Pradesh, right? And I have picked cases from Maharashtra and Madhya Pradesh, right, to talk about it. One is the case of Baburao versus State of Maharashtra, right? And then I know it's a mix of law and non-law audience, so I'm just going to try and make it simple so that the non-law persons also understand what is being talked about, right? It's a case of a rape and murder of a minor where the accused person is found very close to the or the prosecution's case is that the accused person is found very close to the dead body in a naked condition, right, and is sentenced to death by the district court, and we get involved in the Bombay High Court before the Aurangabad bench. Right, a big part of this evidence in Baburao was the DNA evidence. Right, the DNA expert had submitted a report that there is a complete match between the DNA samples found on the deceased and of the accused, of the samples, the reference sample taken from the accused. And the trial court, while convicting, places a heavy reliance on this report. And while there are other pieces of evidence, it is evident that for the trial court, it is this DNA report that has come from the forensic lab that's what is giving it its confidence to go ahead and convict with that much assurance, right? Now, in terms of so the first thing that we argued, and that's something that we need to train lawyers in this concept of, and as Dr. Goswami was saying, it's not only teaching people of forensics the law, it is also as much about teaching people of the law forensics, right? That judges and lawyers also need to be just as comfortable with forensics, just as practitioners of forensic sciences need to be comfortable with the law, and I'll come to that, right? So the first thing that we did before the High Court
was to challenge the fact that the forensic expert was not cross-examined in the trial court, right? And we said that it cannot, that the underlying lab documents for which on which the basis the report was prepared needed to be called for, and the defense needed to be given access to the underlying lab documents, the various lab documents that are used in preparation of the report, because finally it's just the report that was forwarded to the court, and this person was not cross-examined because of claiming the exemption under section 293 of the CRPC, right? We claim that the requirements of section 45 of the Evidence Act on expert evidence, right, requires that you cannot accept the report of a forensic scientist without seeing the underlying documents on which the lab documents on which the report was prepared. The Aurangabad High Court was pleased to send it back to the trial court, right, for the cross-examination of the forensic expert, right? Now, much of what I know about forensics, I must confess here, is because of my fantastic colleague, Miss Shreya Rastogi, right, who Professor Dr. Goswami also knows very well and has interacted extensively with. She's a lawyer who has taught herself forensics, and she is the one who did the cross-examination of the forensic expert in the trial. And I wish at some point, when the case is finally settled in the Supreme Court, we share the transcript of the cross-examination. It was a fully scientific cross, right? And the forensic expert, and I'll tell you what happened in the cross. The forensic expert told us that, it is almost never that the person is cross-examined on the science in the manner in which he was examined by my colleague, Ms. Rastogi, right? It was a fully technical, scientific cross on the methods used, whether there was sort of accreditation, what were the manuals that he used, what did he have the necessary qualifications to use it, what was the foundational validity of the methods and the processes that the lab was using, what equipment was the lab using, right? So it was a proper technical cross, right? And what emerged from that cross was startling, right? First of all, it emerged that the forensic science expert in the lab, in the forensic lab, had conducted not one, but two tests. In the report forwarded to the court under 293 CRPC, and with exemption was claimed, there was no mention of the first test. The report was based only on the second test, and no prize for guessing why the forensic expert did not forward the results of the first test, right? No prize, no surprise as to why, because that exonerated the accused. That was not a match. So that is withheld, and then the test is run a second time, right? And then the report is framed as something that is a 100% match, right? Now, unless you called, and it is so rare in our practice of law that these underlying documents are called for, and then that a cross can be built on that underlying lab documents, right? And what happened in Babura, what emerged also, right? The examiner was not a qualified expert, right? Who is an expert under Section 45? And why did we raise that question? We asked him, are you an expert on this DNA analysis? Are you specifically trained in these DNA techniques? Right? His answer was no. Right? His answer was that he only had training in chemistry. Right? And that because the labs are short in supply with personnel, they are forced to do, people who are not experts, you can't just have any science person do any forensic science technique, right? So it first emerged that questions around, is this person even an expert for the purposes of Section 45 of the Evidence Act, right? And he was not trained in DNA profiling.
The expert also admitted in cross that as part of his analysis of the underlying documents, he disregarded evidence that suggested that the accused may not be guilty. He admitted to falsifying his analysis to make it consistent with the guilt of the accused. Remarkable, right? Remarkable that this is what, and this is just so evident. It was so evident the moment you looked at those lab documents, right? Um, and then, of course, as I said, it was conducted twice. There was issues of sort of that statistical analysis was not done, and most of our DNA reports do not do statistical analysis. And I don't want to get into why statistical analysis of DNA evidence is absolutely crucial if you want to look at DNA evidence. And you know, all of this underlying the fact that this is opinion evidence, right? Even a DNA report is opinion evidence, and we need to know how did the forensic scientists arrive at this opinion, right? And lawyers need to know that just as much as the forensic scientist in Bapurao. He was completely flabbergasted, and he said, I have no idea. I have never been trained as a forensic scientist as to what I am expected to do in a cross examination. And I think in a study that we did of all forensic labs that my colleague Shreya headed in collaboration with the Ministry of Home Affairs, we did a study of all labs in India, right? And that's something that they were very clear that nobody tells us what is helpful for a court in a report. And it is so great to hear Dr. Goswami say that you're bridging that gap here. And that's right from the beginning. You're trying to bridge that gap of what that gap between forensic science and evidence. What does a court need? How do you withstand cross-examination? And how should you view yourself as a forensic scientist? Are you independent? Are you for the prosecution? Right? There are all sorts of legal training that a forensic scientist needs before the forensic scientist either sends documents to court or appears in court himself or herself, right? So anyway, interestingly, what happened in before the Aurangabad bench, we lost, right? We lost, but the High Court threw out the DNA evidence, right? And unlike the trial court, it expressed confidence in all other pieces of evidence, right? And convicted our client. But the High Court really did not have any answer for the results of the first report, which said that the results are not a match. The High Court has no explanation for that, right? As to what do we make of that, right? And hopefully that is something we can get the Supreme Court to focus on when we go in appeal to the Supreme Court in this case, right? So I'll stop with Babu Rao there. I'll go to Anokhila. Sir also mentioned Anokhili. We are involved. Once it was sent back to the trial court, it was first sent, the Supreme Court sent it back saying that there were serious violations of legal representation first. When it came to the Supreme Court, it went back to the trial court. The trial court gave death again. And we were in appeal before the Madhya Pradesh High Court. And we again argued that there were serious questions of representation. But again, what we asked for the lab documents there again, because forensic evidence is in play there. But you know what I want to really highlight? I'm not going to go into the detail of that. Madhya Pradesh, curiously, has this forensic pattern. And what is this pattern? In so many of these cases that we do from Madhya Pradesh, mysteriously, all deceased persons in the clutch of their palm have hair. Right? So many cases. And I'm like, it stops being a coincidence after a point. Right? It stops being a coincidence that deceased persons so regularly in Madhya Pradesh have a clutch of the accused's hair in their hands. And you will notice that pattern only if you are continuously doing cases from that state. How is it that so many accused persons, deceased persons in Madhya Pradesh have hair in their arms or in their hands, right? So it's again, I don't want to go into what kind of hair analysis is done and whether is it even real science, is it a junk science, right? All of that I don't want to get into. Those are all arguments we are making in Anokhi Lal. That what are you doing with this hair?
Where did you get it from? Right? How did you take it? Right? So all these are very serious questions. But again, just wanted to say that even on forensics, the pattern, if you there are ways to see and understand patterns of forensic evidence as well, is the point I wanted to make with Anokhi Lal, right? And also that even in Anokhi Lal, the 293 exemption under the Criminal Procedure Code was done away with, and the prosecution was asked to hand over lab documents to us, and we are about to do the cross examination of the DNA expert in Anokhi Lal as well, right? And that is something that the Supreme Court has been very recent, I mean, of late, been really concerned with, is what is the scope of this exemption of 293 CRPC read with 45 of the Evidence Act. And it has increasingly been saying that courts need to understand the basis on which the expert evidence is given. Under 45, they need to understand that basis, and you cannot always just assume that the burden is only on the accused person, and particularly in when this another case from Madhya Pradesh was sent back to the trial court, Naveen and Ajay versus State of Madhya Pradesh, Justice P.K. Mishra, while sitting with Justices Gawai and P.S. Narasimha, said that you can't assume that the accused can so easily access the forensic science expert. You have to understand the vulnerability of the accused. That it's not that the accused can just pick up a phone and access the forensic science expert, especially the kind of accused that we were talking about. And they said that, and very interesting. I just want to read out, if I may, sort of use the words. This is Justice Mishra's judgment while sending it back to the trial court. Said the trial court treated the accused as if he is carrying a magic wand, which is available to produce highly qualified experts who are government servants on a phone call. There was no opportunity in the real sense to the appellant to cross-examine the experts, right? So this right of the accused to cross-examine the expert is increasingly being recognized in the Supreme Court, not just as it is also something that the court has to facilitate, right? That it can't, and even for the court to be satisfied with the report that is being sent, it needs to look at and the sort of next story I want to tell is of bite mark evidence, right? Is rather popular across states, right? Use of bite mark evidence, forensic odontology, right? Is a case is something that we are challenging in Jitendra Shinde versus State of Maharashtra. Again, a minor girl of rape and murder, and there is bite mark evidence on the deceased's breast, right? Now the question is, what do we do with this, right? What does the prosecution do with it, right? So it takes a 3D model of the denture, right? And then the police converts it into a 2D model of the accused dentition, right? They take a 3D dentition model, they convert it into a 2D model, and send it to a forensic odontologist for comparison against so they have taken this model, they've converted a 3D model into a 2D model, and then they have taken photographs of the bite mark on the deceased breast. They have sent both of these to the forensic odontologist for comparison. And what does the forensic odontologist who works at a hospital in Bombay report? She claimed with reasonable medical certainty that the bite marks were human bite marks. So in forensic odontology, you will know, those of you who are studying it, that whether it is a human bite mark is itself the first question. How do you prove that it is a human bite mark? As a question of science, how do you prove that the bite mark is a human bite mark, right? Second, right? She also claimed in analysis that that this bite mark, she compared these two bite marks and said that the bite mark on the breast of the deceased belonged to the accused person, right? And there was no real explanation in this expert's report how she attributed this bite mark to the accused. She said, yes, I have examined it, and for me, I'm telling you with reasonable scientific certainty that these two match. There is no, if you look at the scientific report, there is no real basis on which that claim is being made, right? And not only was there significant reliance on this in the conviction, and
but also in sentencing, the court uses this evidence to show gruesomeness, right? So what did we do as part of the defense? We got an expert opinion of another forensic odontologist, right? Dr. Richard Bassett. He's a forensic odontologist at the Victoria Institute of Forensic Medicine in Melbourne, Australia, right? So we sent the same thing of what the government forensic expert had. We sent the same thing to this forensic expert in Australia, in Melbourne, who's also a forensic odontologist. We also had to find somebody whose credentials were impeccable, were globally recognized, and therefore there couldn't be any doubt that we were approaching a very serious expert in the field. And he gave an opinion that questioned the very fundamental assumptions of the state's report on this. And he gave 3 reasons, right? He said that he himself, being a forensic odontologist, disputed the claim that your dentition is unique to you. That he said that forensic odontology cannot make that scientific claim that our dentition is unique to us. So the very scientific validity, right, that one person's dentition is unique to you is questioned in science. There is no scientific basis to make that claim, right? Second, he said this, and he cited scientific research to say this claim was first made in 1984, and subsequent scientific research has debunked that claim of uniqueness of dentition, right? 2, he said that uniqueness, even your dentition, cannot be uniquely represented on human skin. Your dentition, on when you bite different substances, transfers onto that material very differently, and certain aspects of human skin need to be taken into account when looking at bite mark evidence on human skin, right? That human skin is elastic and can deform easily with body movement and muscle contraction and tension. And why is this important? Because this can drastically alter the appearance of imprints on what appears on the skin ultimately, right? And then it can't be measured, right? With regard to the experts' reports itself, Mr. Bassett opined that it was not possible to analyze. So all these points were about how valid is forensic odontology as a science for these purposes for which the expert was using it. Then with the report itself, he opined that she could not have just looked at 2 images and compared the 2 things. That she would have had to use at least far better scientific processes to compare the bite mark on the breast of the deceased and the dentition that you were taking from the accused. You can't just look at those images and compare, right? So anyway, this is what we did in the case from Maharashtra, pending currently. Now the point I want to make, and I'm going to skip the third story in the interest of time, right, is that the law is a problem here. The law is a problem here because of what I alluded to, of the relationship between 45 of the Indian Evidence Act on expert evidence and the exemption given to certain experts and government officers under 293 of the CRPC, right? Now, how do you square off this 2 seemingly difficult provisions? And the law hasn't developed sufficiently to ask questions about, is this forensic method a valid science? The law does not seem to allow to ask that question. Is mud analysis a valid science? Is footprint analysis a valid science? A valid science. Not all forensic my point I'm trying to make is not all forensic methods are valid sciences. What is a science are things, and what is foundational scientific validity? Does a forensic practice have ballistics, fingerprinting? What precisely can they do and what can't they do? The scientific research on that is constantly evolving, and we need to be able to ask in our courts,
what is the foundational scientific validity of different forensic practices. And 45 of the Evidence Act does not seem to open that door sufficiently for us, right? It opens the door slightly to say that on what basis did the expert come to this conclusion? Is the person an expert? It seems to be opening the door, and the Supreme Court is opening that door widely to say, how did you come to this conclusion? But on the question of scientific validity itself, there seems to be a much narrower scope for us to do, and there are judgments of the court that speak to on the basis of the argument. And one judgment that you should particularly look at is Rahul and others versus State of NCT of Delhi, 2023 Supreme Court, three-judge bench. It disregarded the DNA evidence in this case due to the failure of the lower courts to understand the underlying basis of the findings, whether the expert applied the method correctly, and we see that movement, right? The US Supreme Court has sort of very squarely addressed this of when a forensic method is sought to be used in court, every court needs to ask certain questions around its scientific validity. Is it a valid science? And it has laid down sort of 5 characteristics of what those conditions of scientific validity are. And this is Daubert, the decision in Daubert of the Supreme Court in 1993. Not going to go through those 5 conditions. And I think there is, and the one point also I want to make is the serious need for our governments, state governments, central government to invest in hardcore scientific research on forensic methods, pure science research. We need to bridge that gap between the forensic science community and the pure sciences community, right? And we need to bridge that gap and test our forensic methods along the rigors of pure sciences, right? And it's something that has been done repeatedly, and that is a movement, and Dr. Goswami will also testify to that, that has contributed to a lot to the growth of forensics in jurisdictions like the United States. This bridge between the pure science community and the forensic science community, and applying their testing methods, and looking at the National Academy of Sciences report or the President's Council of Advisors on Scientific Technology. How do they look at questions of when does a practice amount to a science? And I think that's something that we really need to bring in. There is, and it is a fascinating field on the limitations of what different kinds of sciences can do. Like CDR, it's something that comes up very often in our cases. What can you use CDR for? Call data records. Can you use call data records to pinpoint geographical location? Right? What is the scientific research tell you on that? And lawyers and scientific experts need to be aware of that growing scientific research. And this kind of scientific research, obviously, I mean, it would be stating the obvious, is not different in India as compared to Finland or Australia or America. It's going to be the same, right? So we need to be constantly evolving, all players in the legal system and all stakeholders and the forensic experts, of what can you do with different kinds of evidence, and what is being confirmed, what is being debunked is a constantly evolving science, and we need to keep abreast of that, and we need to find ways to accommodate that shifting nature of scientific truth into our legal systems, right? And I think that's where idea, and look, we all know that it is very difficult, that a large section of our incarcerated population in prisons are poor, right? And therefore we need to worry about, if there is increasing reliance, as we see in our cases, if there is increasing reliance on forensic evidence, what is the quality of that evidence? How are accused persons, and as Dr. Goswami said, accused persons are even struggling to get proper legal aid. Justice Madan Lokur of the Supreme Court said, legal aid for the poor should not become poor legal aid. Right? Legal aid for the poor should not become poor legal aid. Right? Similarly,
Forensic aid for the poor should not become poor forensic aid. And how are we going to build that? Where is that capacity going to come from? And given that investigators and prosecutors are there, and there is a significant push from the government, both in the kind of institutions that are being set up, the kind of investments into those institutions, and also in the new criminal law bills, you can see the very significant push for forensic evidence. If that is where our legal system is going, how do we ensure that there are enough number of scientific there are enough number of scientific experts, those scientific experts know how to engage with the law, and how is there equitable access to that forensic expertise both for the prosecution and also for the defense? We need to worry about that equality of arms consideration in a rule of law system, right? And I cannot stress enough the need for that expertise and the need for that investment in figuring out if we are relying on valid science or not. I'll stop with that. Thank you so much for this opportunity, and I hope to discuss it further. Thank you. Thank you, sir, for sharing such significant cases of Supreme Court with us, telling us about the importance of hair clutcher, evidence of Madhya Pradesh. It is a human bite mark evidence. Thank you, sir, for sharing such important two stories. We, the students of UPSIFS, will surely bridge the gap of forensic science and pure science. A world-renowned business leader and a high-impact motivational speaker, Sri Upendra Giri is the founder of Astrovix Corporation and Project Management Institute PMI North India chapter. Sri Giri is the first Indian and the youngest professional recipient of prestigious Eric Jarrett Award by PMI. An environmental engineer, he has been associated with multiple national programs including Badalta Banaras. His Upbuild Global Incorporation look after the startup as angel investor. I request Sri Upendra Giri to inspire us with his words. Please give him a big round of applause. थैंक यू मैम. समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करूं. सामने कुछ यंग बच्चे दिख रहे हैं जिनकी आंखों में सपने हैं, शायद पेट में चिंगारी है और पैरों में स्प्रिंग्स हैं कि कुछ करना है. तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर जी के गोस्वामी जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, और ब्यूरोक्रेसी ऑफ इंडिया जुडिशरी सामने आपके साथ बैठी है, और जैसे मैंने बताया कि आंखों में सपने हैं, और उन सपनों के बीच में, इन लोगों के बीच में मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, सिर्फ मुझे ये देखना है. बात है 1983 की. उस समय गांव से निकल के मैं दिल्ली आया था. तो दिल्ली में उसी आज के आसपास एक खबर आई थी कि भोपाल ट्रेजेडी हुई थी. आप सब लोगों को याद होगा शायद. उसमें करीब 3,700 लोगों का जो कि एविडेंस बेस्ड है कि भाई इतने लोगों की डेथ हुई. और हमारे देश में आपको पता ही है एविडेंस और एक्चुअल में क्या फर्क हो सकता है. तो एक सपना बैठा कि मुझे कुछ करना है, कि अपना जो हमारा लाइफ में 2 माइलस्टोन होते हैं. एक तो जब हम जिस दिन पैदा होते हैं और जिस दिन इस दुनिया से अलविदा करते हैं. पैदा होना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन इस दुनिया से कैसे जाएंगे वो हमारे हाथ में जरूर होता है. तो उस दिन एक बच्चे के 13-14 साल की उम्र है बच्चे की, उसके दिल में, दिमाग में एक जुनून बैठता है कि कुछ करना है. एनवायरमेंट की उस प्रॉब्लम इतना सीवियर नजर आ रही थी कि उसके 1-2 डिकेड बाद सबको भूल गए कि कुछ ऐसा आपदा प्रपदा नेचुरल या मैन मेड प्रॉब्लम आई होगी.
जब संविधान बनता है, करीब 75 साल हो गए इस बात को, राइट? और 75 साल में हमारे देश की आबादी कितनी बढ़ गई? कोई आइडिया, कोई बताएगा? गूगल कर लो भाई, पीछे वाले तो तुरंत कर लेंगे। पता है कितना? 4 टाइम्स पॉपुलेशन बढ़ती है, और टेक्नोलॉजी कितनी रफ्तार से बढ़ी है वो तो आप देख ही रहे। और टेक्नोलॉजी एक चाकू की तरह है, किचन में बहुत अच्छी सब्जियां काट सकती है, आपको खाना बना इसमें इस्तेमाल हो सकता है, और रात को स्ट्रीट पे उससे मर्डर भी हो सकता है। तो मैं कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा हूं आपसे। दैट टाइम हमने कसम खाई कि हमें एक एनवायरमेंटल इंजीनियर बनना है, और एनवायरमेंटल इंजीनियर की आज भी डेफिनेशन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि एनवायरमेंटल इंजीनियर करता क्या है। आपकी वही हालत होने वाली है वायदे भाई। देखिए, जिसकी मंजी के नीचे आग लगती है ना, उसको पता लगता है। कोविड ने हम सबको दिखा दिया। कोविड की न्यूज पहली बार एक न्यूज थी आपके लिए, सबके लिए, लेकिन वो हकीकत थी हम सबके लिए, और उसने दुनिया को जगा दिया। और फिर सब लोग कहने लगे कि भाई क्लाइमेट चेंज भी बहुत बड़ा प्रकोप हो सकता है। अब आप कहेंगे भाई प्रकृति की बात क्यों कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस में, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं हम? कहते हैं घर वालों पर पहाड़ गिर गया, सुना है ना कई बार। उत्तरांचल में कोई 15 लोग फंसे हुए हैं, पहाड़ उन पे ही नहीं गिरा, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके परिवार वाले हैं, कैसी फीलिंग में होंगे इस समय। और मैं चाहता हूं इस पोडियम से कि यहां पे उनके लिए क्या सॉल्यूशन है। जुडिशरी भी बैठी है, और ब्यूरोक्रेट्स भी बैठे हैं, पॉलिसी मेकर्स, रक्षक भी हैं। कॉमन आदमी के लिए क्या सॉल्यूशन है उसका? तो मैं कुछ अपनी लाइफ से कुछ ऐसी चीजें उठाना चाहूंगा जो कि आपके दिल में, दिमाग में और आपके जमीर तक पहुंचे। तो मैं चाहूंगा कि बच्चे इसको देखें कि हम लोग क्या कर सकते हैं। मेरा भी यही सपना था। इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए मैंने आईआईटी दिया, फेल हुआ। जामिया का एडमिशन मैं 3rd वेटिंग लिस्ट में था, और ऑनरेबल जज साहब से बोलूंगा कि लास्ट ईयर मैं एजुकेशन मिनिस्टर के साथ में जामिया में लिया, जो कि जब मैंने ज्वाइन किया था मैं 3rd वेटिंग लिस्ट में था, और जामिया की रैंकिंग 83rd यूनिवर्सिटी होती थी। लास्ट ईयर जामिया की रेटिंग 3rd थी हिंदुस्तान में, और एजुकेशन मिनिस्टर के साथ में मैं डायस शेयर कर रहा हूं, और मैं ये बोल रहा हूं कि मैं ट्रूथ मस्ट बी टोल्ड। जैसे आपने भी बोला डॉक्टर गिरी, मैं डॉक्टर नहीं हूं भाई, क्योंकि मैं सॉल्यूशंस जरूर प्रोवाइड करता हूं। फॉर्मली डिग्री की डॉक्टर नहीं हो सकती, बट हाँ सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, और सॉल्यूशंस पे ही आप एक वैल्यू क्रिएट करते हैं। जैसे कहते हैं ना, जाना जो दुनिया से है तो आप क्या छोड़ के जाते हैं। इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू लीव फॉर योर चिल्ड्रन टुडे, इट्स अबाउट व्हाट यू लीव इन देम फॉर फ्यूचर जनरेशन। दैट्स द पॉइंट। तो जब एडमिशन की बात आई थी तो 3rd वेटिंग लिस्ट में जामिया में चले गए। हुआ ऐसा कि मेरी ससुराल वाले, मैं 3rd ईयर में रहा हूँगा, तो मेरे जो यूएस के मेरे इन-लॉज वहां रहते थे, तो उनको एक इंजीनियर चाहिए था। मेरे घर में 14 वकील है बाय द वे, 14वां बैठा हुआ है यहीं पे। ही वर्कड फॉर सिद्धार्थ लूथरा बाय द वे, ही शुड मीट हिम, दैट व्हाट दीज चिल्ड्रन थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर जनरेशन टुडे। 14th लॉयर इन द फैमिली। तो उनको, मेरे ससुराल वालों को लॉयर नहीं चाहिए था। क्यों? लॉयर और डॉक्टर्स अमेरिका में बड़ी मुश्किल से स्टैब्लिश होते हैं, क्योंकि लीगल फ्रेमवर्क फर्क है, और ऑफ कोर्स मेडिकल प्रोफेशन भी बहुत लंबा टाइम लेता है। इंजीनियर बन गए तो हमारा फिटमेंट हो गया, शादी हुई, और हमें विदा कर दिया जाता है 22 साल की उम्र में अमेरिका के लिए। 31 साल हो गए इस बात। और मुझे अभी भी याद है, मेरे पासपोर्ट पे $13 का जिक्र किया गया है
कि मैं $13 लेके अमेरिका जाता हूं। किस सपने के साथ? कि अमेरिका में जाके पढ़ूंगा। पढ़ाई की कीमत $1,00,000। तो ये तो डिस्कनेक्ट, कॉन्फ्लिक्ट आ गया। फिर कैसे सॉल्व करें? एक दिन ऐसा होता है, जिस कैंपस पे लिहाई यूनिवर्सिटी बना था, वो कैंपस का नाम है बेथलेहम स्टील। अगर गूगल करेंगे आप, तो बेथलेहम स्टील ने दुनिया के जितने भी स्टील के इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, वो सारा कंट्रीब्यूशन बेथलेहम स्टील का है मोस्टली। अब जब भी कभी इन्वेंशन होती है, उसका बाई प्रोडक्ट दूसरी जनरेशन के लिए प्रॉब्लम होता है। मान लीजिए इस बात, फर्स्ट हैंड बता रहे हैं हम आपको। एनी इन्वेंशन विच यू क्रिएट टुडे वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर टुमारो, which would require forensic also to solve this problem. तो स्लैग छोड़ दिया जाता है, उनके माउंटेन्स होते हैं स्लैग्स के, न्यूसेंस है पूरे उसके लिए, शहर के लिए। एट द सेम टाइम हमारे एक अलुमनाई थे, लिया कोका एंड हेनरी फोर्ड, वो भी मेरे साथ, मतलब ऑफ कोर्स पहले पढ़े थे, लेकिन वो क्या प्रॉब्लम छोड़ गए दुनिया के लिए? आपको एक सुविधा छोड़ गए, स्पीड की। ऑटोमोबाइल, आप तेजी से चलते ना, दौड़ते हैं गाड़ी लेके, लेकिन गाड़ी को रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? ब्रेक लगाने पड़ते हैं। और ब्रेक लगाने के लिए आपके टायर में जो ग्रूव होता है, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है अमेरिका में। अगर वो नहीं है तो आपकी गाड़ी को ग्रास मतलब डाल दिया जाएगा कि जब तक ये रिप्लेस ना हो तब तक आप गाड़ी को रोड्स पर नहीं ला सकते। इस लॉ ने क्या किया? दिस अबंडेंस ऑफ स्क्रैप टायर्स। तो एक दिन क्या देखा हमने कि 1.5 माइल लॉन्ग कार टायर पाइल में आग लगी है, और हम कर रहे हैं करीब 80 माइल की स्पीड से दौड़ रहे हैं, गाड़ी चला रहे। हमने जब वो देखा सीन, हमारे को लगा यार ये तो प्रॉब्लम सॉल्व करने लायक है। इंजीनियर थे, केमिस्ट्री पहले पढ़ी थी, हमें कार्बन कंपाउंड नजर आया। हमने कहा कि ये प्रॉब्लम ही नहीं, जो स्लैग टायर है कैंपस पे, उसको भी सॉल्व किया जा सकता है। सो हमने एक प्रपोजल रखा, 22 साल की उम्र थी हमारी। एक प्रपोजल सबमिट किया जाता है एनएसएफ को, नेशनल साइंस फाउंडेशन को, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। गेस व्हाट, हमें तारीफ चाहूंगा इस बात पे, 32 साल, सुनिए अभी कहां बताया मैंने, 22 साल की उम्र में आई सबमिटेड प्रपोजल विच गॉट फंडेड फॉर हाउ मच मनी? $300,000। मेरे को फीस कितनी चाहिए थी? 100,000। काम बन गया ना? क्या आपसे मैं उम्मीद कर सकता हूं ऐसी? वो तब होगा जब ये सिस्टम पॉलिसी लेके आए कि कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर पढ़ा रहे हैं, साथ में उसको इंडस्ट्री एकेडमिया का जो गैप पड़ा हुआ है उसको सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को एनकरेज करने के लिए आप जैसे लोगों को ऐसा अनुभव दिलवाए। जब आप पढ़ रहे हैं तब आप अपने फ्यूचर के लिए एक फाउंडेशन तैयार करें। आपको नौकरी मांगने की जरूरत नहीं है, नौकरी वाले आपके पीछे दौड़े और आपको ऑफर लेटर लेके ढूंढे 50 लाख रुपए साल का। अच्छा रिजर्व करते हैं कि नहीं आप लोग के? नहीं, ताली तो बजा लो इस बात में। तो इसके लिए कौन करेगा? Who will solve this your problem? क्योंकि हर चीज को वाई में लेके चले जाइए, कैसे सॉल्व कर रहा है इसको। तो एनीवेज, जो आप इस हाईवेज पे जो देखते हैं ना, जहां पे गाड़ियां बहुत स्पीड से आते हैं इंटरसेक्शन पे, और उनको रोकने के लिए जो मैट पड़ा हुआ है ना, वो इन्वेंशन किया था मैंने 22 साल की उम्र में। जब आप स्टेडियम में देखते हैं ना, जो एक कलरफुल स्पंजी वो थे ना, कलरफुल दिखता है, वो कुछ नहीं है, स्क्रैप टायर है, उसकी इन्वेंशन की थी। योगा मैट्स होते हैं, उसका बेंजीन से, वाटर से बेंजीन को कैसे निकालना है, उसके फिल्टर्स तैयार किए। ऐसे 5 इन्वेंशंस किए थे 2 साल में। मैं इस चीज का जिक्र क्यों कर रहा हूं आपसे? आज जर्मनी की कोई टीम बुलाई गई है, हमारे देश की कोई प्रॉब्लम फंसी हुई है उत्तरांचल में, सॉल्व करने के लिए। मैंने कसम खाई 2003 में दोबारा, अटल बिहारी वाजपेयी साहब आह्वान किया था,
प्रवासी भारतीयों से कि हमारी नजरें आपकी जेब की तरफ नहीं हैं, हमारी नजरें हैं आपके अनुभव, तजुर्बा, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, इंटरनेशनल इनपुट्स विच आपने गेन किए हैं, देश में लेके आए। हमने आप अब कुछ नहीं देखा। हमारी वाइफ जो अमेरिका में ग्रो अप हुई हैं, बच्चे दोनों अमेरिका में पैदा हुए हैं, हम दोनों को पैक किए और हम उनको लेके हिंदुस्तान आ जाते हैं देश की सेवा करने। 32 साल में सर मैंने अपना ग्रीन कार्ड नहीं बदला है। जिस ग्रीन कार्ड के लिए आज भी इलीगल इमिग्रेशन के लिए मैक्सिको में 1 लाख लोग हिंदुस्तानी खड़े हैं, आज 1 लाख जो पहले अपनी जमीन बेच चुके हैं, अपनी जमीन बेच चुके हैं, अपनी जुबान बेचने की तैयारी में हैं और जिम्मेदारी से तो भागने की पूरी हरकत कोशिश कर रहे हैं। मानेंगे इस बात को? इस प्रॉब्लम को एलियन नहीं लेके आए हैं दुनिया की, और ना एलियन लेके आके सॉल्व करेंगे इसको। मुझे जब देखता हूं ना किसी बच्चे को, मैं उसकी आंखों में देखता हूं। कल बड़ा अच्छा मसला निकला, मैं गांव में था अपने में, जिस गांव पोखर के सामने मैं खेला कूदा हूं, पेपर पे मैं लेके आऊं पर्चा, मेरे गांव का है ये, प्रधान जी ने लेटर लिखा है, इसके लिए लिखा है जिलाधिकारी बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट। इसकी प्रॉब्लम बता देता हूं आपको, आप सब लोग विज्ञानी हैं, विद्वान हैं। एक 500 साल पुराना गांव है, उसमें एक पोखर है जिसका साइज करीब 20 एकड़ है। उस 20 एकड़ की पोखर को ओवर पीरियड टाइम, किसी रात टाइम में उसको एक खेत बना के पेपर पे किसी को बेच दिया जाता है। पोखर बेच दी जाती है किसी थर्ड पर्सन को जो किसी और गांव का है। अब उसमें मछली पालन शुरू हो जाता है और उसकी देखरेख उस हिसाब से नहीं होती जिस हिसाब से आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उसमें केमिकल्स तरीके डालते हैं कि उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। और यह भी सुनने में आया कि ओवर पीरियड टाइम 2-3 बार उसमें बोरवेल भी डाला और जो पानी है उसको अंदर डाल दिया जाता है। अब उसकी वजह से गांव के 8,000 लोगों की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। मैं अब फिर चाहूंगा इस दायज से ये प्रॉब्लम सॉल्व करिए साहब मेरे लिए। 8,000 लोगों के स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, एपिडेमिक्स भी फैल सकता है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। 500 साल पुराना तालाब आपने गायब कर दिया, खेती हो रही है उस खेत में। भाई फॉरेंसिक वाले बताएंगे इसको। मैं कहना चाहता हूं कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको शेयर इसलिए कर रहा हूं कि फॉरेंसिक को ऐसा मत सोचिए कि आइसोलेशन में गेम होगा फॉरेंसिक का। इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी डोमेन। जैसे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, सो आपको बायोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, सिविल इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी, आपको मैकेनिकल भी करनी पड़ेगी। थोड़ी नॉलेज आप, यू हैव टू नॉट टू बी ए रिसोर्स, एक्चुअली यू हैव टू बी रिसोर्सफुल। रिसोर्सफुल होंगे तो रिसोर्स शायद लेके आ पाएंगे आप। और जब एक्सपर्ट आपके साथ जुड़ेंगे तो आप कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम गवर्नमेंट की तरफ देखते थे प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए। इलान मस्क ने बोला भाई देखो गवर्नमेंट तो मुझसे सीख ले आके आप। क्या इस भीड़ में जो बच्चे पहने यूनिफॉर्म पहने बैठे हैं, मैं देखना चाहता हूं उनमें इलान मस्क कौन है, इनमें नारायण मूर्ति कौन है, उसमें विनोद खोसला कौन है, इसमें नरेश त्रेहन कौन है। गांव से कितने बच्चे आए, हाथ उठाओ जरा। कम से कम आप लोगों से तो उम्मीद कर ही सकता हूं भाई, क्योंकि मेरी बात जो है ना, अभी जामिया के 100th एनिवर्सरी पे मैंने जोश में ये बोल दिया भाई गांव से बच्चे कितने, तो 4 लोगों ने हाथ उठाया। मैंने बोला मैडम इनको ऊपर फ्रंट पे ले बुला लो, इनके फोटो ले लो मेरे साथ, इनकी पूरी जिंदगी की कॉस्ट फीस मैं दूंगा। ये बात सुन के 20 लोग और आ गए। मैं बोला देखो ऐसा 4 को तो मैं सीईओ बना दूंगा, और जो बाकी 20 हैं पहले तो उनको यह समझना पड़ेगा कि वो हैं कौन, वो पर्पस क्या है, और यह भटकती आत्मा है। तो एक बार जन्म तो जरूर होता है। मैं कहता हूं 1 से बार जन्म हो सकता है। दूसरा जन्म तब होता है जब हमें पता लग जाए
कि हम पृथ्वी पर आए क्यों हैं। बात बनी। मुझे पता है कि वक्त कम है, दिल में आगोश है, आक्रोश है, बहुत सारी बातें करने का, मतलब बाद में जब मैं पुलिस ट्रांसफॉर्मेशन को ज्वाइन किया 2008 में बॉम्बे ब्लास्ट हुआ, तो चिदम्बरम साहब उस समय होम मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। हेमंत करकरे मिस्ड माई क्लास बाय 2 weeks. I teach at Lal Bahadur Shastri Academy. Dial 100 नेशनल पुलिस रिफॉर्म के करीब 18 initiatives they were created in my program, which I teach as program management. There's a body called Project Management Institute. I would request and advise कि आप ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को, फॉरेंसिक की जब इंट्रिकेसीज आप सिखा रहे हैं तो ग्लोबल प्रैक्टिसेस को इग्नोर ना करें। मैं अभी आपके सामने कहता हूं कि आज देश की 3 फौज हैं, 3 में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन विलेज पॉपुलेशन का रहता है। स्पोर्ट्स से जो मॉडल लाते हैं वो सारे बच्चे विलेज से आते हैं। जो पेट्रोटिज्म जो घुसा पड़ा है ना देश में, जो देश चल रहा है वो गांव वालों से चल रहा है आज भी। इसलिए मैं ऐसी बात दिल से इसलिए बोल पाता हूं कि मैं उस जमीन से बहुत जुड़ा हुआ हूं। तो मेरा कहना यह है कि साइबर सिक्योरिटी वुड बी नेक्स्ट बिग वर्कफोर्स वुड बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। उसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि देश में जैसे आईटी एक्सपर्ट्स जा रहे हैं दुनिया भर के लिए, क्यों इस इंस्टीट्यूशन से यहां से करीब $250,000 पर मंथ के पैकेज पे बच्चे हिंदुस्तान से बाहर डिफेंस और बाकी इंजीनियरिंग, चाहे वो क्लाइमेट से रिलेटेड हो या साइबर से रिलेटेड हो, उन सबको ये लोग बच्चे जो निकलेंगे यहां से उनको सपोर्ट कर पाए। इसी दुआ के साथ, इसी तमन्ना के, इसी ख्वाहिश के साथ मैं तो सिर्फ आपके उज्जवल भविष्य की कल्पना करता हूं। उसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपके मंगलमय भविष्य की कल्पना करता हूं। थैंक यू सो मच। So much, sir, for this eloquent speech and telling us that failure is never a setback, it's a setup for a comeback. A 1990 batch IPS, Srimati Renuka Mishra, has 33 years of experience in policing in the area of human resource management, recruitment and training, investigation of crime, and many more. She has worked as UNMIK as Deputy Chief Internal Investigation Wing. She is a certified consultant in training needs assessment. I kindly invite Srimati Renuka Mishra to take up the podium and address forensic science students. A very good afternoon to all those present here. I'm honored to find myself on such a distinguished and erudite dais, albeit as a last-minute stand for the DGP, but it was sprung upon me. I will try and do justice to the 5-7 minutes that I have. I would like to congratulate each one of you, first and foremost, each one of us present here in the Chandrasekhar Azad Auditorium, and all the citizens of the great nation on the occasion of Constitution Day, firstly. We are gathered here today to reinforce the roles that we play in upholding the values, the letter and spirit of the Constitution that was adopted 74 years ago. It gives me immense pleasure to congratulate Dr. G.K. Goswami, one of my probationers in the academy, and his team to set the ball rolling and get the State Forensic Institute Lucknow on track. And it naturally follows that my next round of congratulations is to this first batch of State Forensic Institute Lucknow. You will set the tone for years to come. If you do well, so will the others. It reminds me of an example. It's a story of the St. Paul's Cathedral that was razed to the ground in the Great Fire of London. You would have heard of the St. Paul's Cathedral. For more recent reference, Prince Charles and Lady Diana were married there. So there was this Great Fire of London in which it got burnt, and there
they were constructing it again. So George Bernard Shaw was visiting at the time, and he went to see the St. Paul's Cathedral and to see what work was happening there. So when he went there, he asked the first mason who was working there. In those days, they had stone masonry, in which you just kept one stone on top of another stone, and that is how the building was done. So he went and asked the first mason, "Sir, what do you do? What is your work?" So he said, "My work is to put one stone on another stone, and this is the group of people who do it together, and this is the work that we do. And from morning to evening, this is what we do." So he said, "Okay." He went a little further and he said, "Sir, what do you do?" He asked another mason, "What work do you do?" So he said, "Sir, I work from 7 o'clock in the morning to 7 o'clock in the night. They don't treat me well, they don't pay me well, they don't give me rest, and I do it for the money, and that's why I'm here. And this is the work I do." So he said, "Okay." He went a little further and he asked a third mason. He said, "Sir, what do you do?" He said, "Oh, sir, don't you know? St. Paul's Cathedral was razed to the ground in the Great Fire of London, and I am part of that grand design of rebuilding it." Now, all the three masons were in effect doing the same thing. What was the difference between them? Their perception of what they were doing. So, as the first batch of students who are going to pass out or who will eventually pass out of the State Forensic Institute, you have to take a call as to which mason you would be like in future. Because if you think कि ये मुझे करना है, मुझे और जगह एडमिशन नहीं मिला, यहाँ पे मुझे एडमिशन मिल गया, मुझे बस कंप्लीट करना है, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है किसी तरह, फिर देखें क्या होता है, तो then it will not help. Because you actually you have to know your place in this grand scheme of things. We have very great legal luminaries on the stage. We have this whole entire criminal justice system which is looking to you to provide some kind of support. We have IOs. Now, at present in training, we have almost 9,000 sub-inspectors who are undergoing training. They are all going to become investigating officers. We can teach them how to take a 161 statement. We can even teach them how to take a person to get a 164 statement done. But if we do not make him aware of how science can help him, or how forensic science can help him to actually bring all that hard work of documentation that he does to be able to bring a case to the court, as long as we leave it to him to understand for himself, we are not going to get the convictions that we desire, or although we should not have any part to play in those convictions. But if we do not bring a proper investigation to the court is also not going to be equipped well enough to understand as to who is innocent and who is guilty. And that is where you come in. So if you do not understand this grand scheme of things, and you do not understand how important you are, or how important your work is going to be in future, and you do not take it with that spirit, then there will really be no point to all of this. So I exhort you to understand your place and take it seriously, and not go from 7 o'clock to 7 o'clock in the night, but actually understand that you are a part of a very grand scheme of things in which you will contribute to the nation in this manner. Legal luminaries and other people have spoken before me, so I do not need. I'm very intrigued, and I'm very happy to see that you have a very simplistic name called Project 39A. So, automatically it also reminds you as to what 39A is, and it also tells people what you do in 39A. So, the right to legal representation. Even 304 CRPC talks about the right to fair trial and legal aid, that you're required to give legal aid. But what kind of legal aid? As in Anokhi Lal, it was said that real and meaningful assistance is required to be provided. So all this, everybody who's spoken before me has been thinking of it from the point of view of the accused. Let me also look at it from the point of view from the victim. The victim also has a right to meaningful legal assistance. Now, the prosecution is state sponsored. The state takes over the
role of taking up the case for the victim. So we presume, we make a presumption that everything is good because we ourselves are, doing the investigation and we ourselves are supporting the victim completely. But are we actually? Are we doing a proper investigation so that we can actually provide justice to the victim? We are providing justice to the accused by supporting him, even if he is somebody who is actually the accused. But in a trial, there may be certain loopholes that as investigating officers we might leave inadvertently, or as forensic scientists we may not look into properly, because of which somebody who is actually accused, who's actually the criminal, goes out back into society. So where is the justice for the victim also? So we need to look at it, that how do we reinforce the victim? This is the only way that we reinforce the victim. Other than normal investigation, we have to bring forensic science into it at every stage. So it's also important to know what kind of forensic science, what is that forensic science which is actually a science and which will actually hold in court. So the presumption of real and meaningful assistance is always there, but are our prosecutors actually providing that real and meaningful assistance? Are we as investigating officers actually doing that? Are you as forensic scientists actually doing that? So each of us, another issue that we talk about it in gender issues, we talk about it everywhere, that each of us is bound by our own socialization process. हम लोग कैसे पैदा हुए, कैसे माहौल में पैदा हुए, हमारे माँ बाप ने हमें क्या सिखाया, सोसाइटी ने हमको क्या सिखाया, ये सारी चीजें जो हैं जाने अनजाने में कुछ बायसेस सेट इन होती हैं. There are implicit biases, there are unconscious biases, and each and every one. कई बार आप सुनते हैं कि थाने पे कोई चली गई, कोई विक्टिम चली गई, कोई रेप विक्टिम चली गई, और वहां पे थाने पे जजमेंटल होते हुए उससे पूछा गया कि भाई आप यही पहन करके आप घूम रही थी सड़क पे, आप 10 बजे रात में, 11 बजे रात में आप क्यों सड़क पे घूम रही थी, आपने इसी आवाज से उससे बात किया होगा. देयर इज सो मच ऑफ जजमेंट दैट इज यूज्ड. We are not above this judgment, but we should be. When we are in uniform, when we are wearing a uniform, we need to rise above this socialization process. Whether this uniform is khaki, or it is white as far as doctors are concerned, or it is black as far as the lawyers and the judges are concerned, we all need to rise above this socialization. If we do not, then these biases are bound to creep in. There is law, there is rule of law, but if there is some place of subjectivity that comes in, when an opinion has to be given, or when a judgment has to be given, or when a reading of the situation has to be done, at that stage, if that bias comes in, then that could be disastrous for both the victim as well as the accused. There are cases in which there was one case which was a very, very old case. In fact, it was the first case under the Innocence Project. It was the oldest case of Leonard Mack, who was arrested in 1975 for the rape of a teenage girl. Later on, he was convicted because of a TI parade. Now, many times you cannot, when the racial features are such that if you are not familiar with those features, the first feature that comes to your mind is he's black. The same feature that comes to your mind is he's got thick lips. He's got a particular, so in the TI parade, he was identified as the accused. And 47 years later, due to DNA evidence, he was proved to not be the person who had actually raped her. And then he was, by that time he had already served his time, everything was done, but at least his name was cleared and the right person was found. So sometimes these kind of biases, these kind of things which we cannot understand, they come in the way. And these kind of racist, we call it racist biases, but we need to be aware of it. And many times we ourselves are not aware of what our implicit biases are. Now, inadvertent tampering of evidence is another very small area that I would like to bring to your notice. जो आईओ होता है, उसका ज्ञान कहाँ तक सीमित है और कहाँ तक उसको बढ़ाना है. डज ही नो कि उसको वो एविडेंस कैसे कलेक्ट करना है, कैसे उसको प्रिजर्व करना है. आपका तो बाद में आता है, कहानी आपकी बाद में आती है जब आपके पास लेबोरेटरी में आता है, बल्कि आपकी कहानी पहले ही शुरू हो जानी चाहिए फील्ड यूनिट स्टेज से, कि आप ही जाकर के उसको कलेक्ट करिए, प्रिजर्व करिए जैसे होना चाहिए.
तो अगर आईओ को कलेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है एविडेंस को, और उस एविडेंस में या तो उस एविडेंस पर से के कलेक्शन में या प्रिजर्वेशन में कोई टैंपरिंग हो गया, इनएडवर्टेंट ही सही, तो वो कोई मायने नहीं रखेगा, मतलब मायने रखेगा कोर्ट में, एंड दैट एविडेंस वुड नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. Likewise, if he does not maintain the chain of custody while he is sending it to you, if he does not write specifically कि क्या question उसको पूछना है, कई बार उनको यही नहीं समझ में आता, केवल एविडेंस भेज देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता है कि फॉरवर्डिंग स्लिप में क्या प्रश्न पूछना है, आपको फोरेंसिक साइंटिस्ट से किस एविडेंस की आपको आवश्यकता है, क्या क्वेश्चन का आंसर आप खोज रहे हैं, ये कई बार वो नहीं बता पाते हैं. सो दिस इज अनदर एरिया विच इज अ वीक एरिया विच वी रियली नीड टू वर्क ऑन. बट ऑल in all, I would say, whatever we do, wherever we do it, what is a constitutional value that we need to uphold? Nowadays, we don't use these words also. Integrity is paramount. आप कुछ भी करिए, आपका मकसद क्या है, आप क्यों आए हैं इसमें, क्या पैसा कमाने के लिए आए हैं, क्या आप कुछ और करने के लिए आए हैं? बिकॉज योर इंटेग्रिटी विल ओनली डिफाइन वेदर दैट रियल एंड मीनिंगफुल असिस्टेंस इज एक्चुअली प्रोवाइडेड. I would like to end with a quote by Martin Luther King. Cowardice asks the question, is it safe? Expediency asks the question, is it politic? Vanity asks the question, is it popular? But conscience asks the question, is it right? And there comes a time when one must take a position that's neither safe, nor politic, nor popular, but one must take it because it is right. I wish you well, and I request you to introspect, each one of you, as to why you are here and what values you plan to uphold. Every one of you, remember that every value has a price. Are you willing to pay that price? Is the question. Be prepared. A good value, a bad value, whatever it is, are you willing to pay that price? Because we cannot afford to have people without integrity in the system, no matter what color uniform they wear. Thank you very much. Jai Hind. Thank you very much, ma'am, for inspiring us and gracing us with your invaluable words. Sri A.V. Rajamouli is an efficient officer of 2003 batch born in Uttar Pradesh cadre. He hails from Andhra Pradesh. He served nearly 12 districts of UP, including Gautam Buddha Nagar. He is currently serving as Secretary Home Government of UP and today representing Sri Sanjay Prasad IAS since he is engaged in some urgent official commitment. I sincerely request him to kindly speak his view on this occasion. Please, sir. Respected honorable distinguished guests and dear students. Like my predecessor, I am also a last minute entrant into today's program. This institution was one of the foremost priorities of Honorable Chief Minister, as Dr. Goswami pointed out. And he has been reviewing this project in every review meeting of Home Department. The objective has been that the state shall have the best forensic institute, best faculty, best facilities, and it shall produce best professionals. I hope the students who are sitting here would make best use of the facilities that are being provided in this institute and come out as really professionals. The professional, as you are aware, is marked by few distinguished things. One is willingness and ability to work unsupervised. And second, willingness and ability to certify his work as the best. These are the two hallmarks which make a worker into a professional.
So this institute is spread in around 50 acres, and it's being constructed, the new institute, with a budget of around 250 to 300 crores. And as I pointed out, Honorable Chief Minister said funds will not be a problem. Let the institute be the best in the country. Let it have the collaboration with the best of India as well as the best of the world. While entering into the institution, I just was looking at it, and your motto, as it reads, Sarvesham Nyayardham Vijnanam. So it's one of the best mottos I have ever read. Because today being the constitutional 74th Indian Constitutional Day, science of validating evidence as our constitutional mandate prescribes us to ensure that justice should not only be done but also seem to have been done. So this institute, the products of this institute, and the experts who have guided us, all of us work towards the same cause. As you are aware, in every dispute, there will be our side, the other side, and the right side. And this institute and this forensic science would enable us to reach to that right conclusion. That's what the experts also opined and impressed upon. The constitutional mandate of scientific temper and right to legal representation, enabling right to fair trial and legal aid, all these will be served on this constitutional Indian Constitution Day through this institute, especially through the professionals. As Madam, my preceding speaker, pointed out, you have to choose for what values you are going to stand for. And like the other speaker, the expert speaker, who pointed out various lacunae in collecting and presenting the evidence, for especially the forensic evidence. So had that person or personnel been well trained, and had they been well entrenched in their value system, those problems would not have arisen, first of all. And when we were coming out of our training institute, I remember what our director of the academy, Shri Binod Kumar, pointed out and said. He said so many things on that day. And one thing he said, when you go out of the institute, remember this stanza from Mahabharata. So Lord Yama asks Yudhishthira, who are your friends? Because at the end of Mahabharata, Yudhishthira reaches the higher planes with the body. All his brothers, all his relatives, one after the other, they collapse, including his wife. So when Yudhishthira reaches and Yama asks, you have come alone, where are the relatives? So he says, yes, Satyam Mata, Pita Jnanam, Dharmam Bhrata, Daya Sakhav, Shantihi Patni, Kshama Putrau, Shodase Mama Bandhava. These are my 6 relatives. Satyam Mata, truth is my mother. Pita Jnanam, knowledge is my father. Dharmam Bharata, Dharmam, righteousness, is my brother. Shantihi Patni, Daya Sakhav, compassion is my friend. Shantihi Patni, peace is my spouse. So let these relatives be your permanent relatives when you leave this institute. And when you have these friends or these relatives in your personal as well as professional endeavors and journeys, the true purpose of this institute
and the constitutional mandate would fructify. Thank you very much. Thank you, sir, for sparing 6 relatives with us and for your rapid words. Honorable Justice Rajiv Singh is graduate in mathematics and law and holds a diploma in aircraft maintenance engineering. He became a judge in Allahabad High Court, Lucknow bench in November 2020 after an excellent 25 years career as an advocate. I now call upon Honorable Justice Rajiv Singh to share a few words. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर गोस्वामी, यहाँ इन बच्चों के बीच में बुलाने के लिए। ये फर्स्ट बैच है फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट के बच्चों के लिए। यहाँ तो वैसे हम सुनने के लिए आए थे, जो एक्सपर्ट स्पीकर्स थे जिन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया है, डॉक्टर सुरेंद्र नाथ को, लेकिन यहाँ आने के बाद और बहुत सारी चीजें मालूम हुई। डॉक्टर गोस्वामी ने खुद भी बताया कि इस इंस्टीट्यूट का पर्पस क्या है। वैसे नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो महाभारत में एक श्लोक है, वो कई बार रिपीट किया गया है। वो धर्म और रक्षति रक्षता, वो उसके आगे पीछे और भी है। वो कई पर्व में अलग अलग अनुशासन पर्व में है, वन पर्व में है, मनुस्मृति में है। तो टोटल अगर हम देखते हैं तो जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। इसका मतलब ये है कि जब हम रूल्स के हिसाब से चलते हैं तो वो लॉज हमारी खुद भी रक्षा करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये रूल्स का वायलेशन होता है। और जब भी कोई सोसाइटी डेवलप कर रही होती है तो उसमें इस तरीके से होता है कि अगर सोसाइटी में डेवलपमेंट है तो साथ ही साथ जिस तरीके से रिवर के 2 किनारे होते हैं, एक किनारे पे डेवलपमेंट है, दूसरे किनारे पे कुछ इस तरीके से कुछ ना कुछ ऑफेंस और अपराधी जरूर डेवलप हो जाते हैं। और अब इसे बैलेंस कैसे करना है? अगर एक भी किनारा डिस्टर्ब होगा तो रिवर का जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए जो आइडियल सोसाइटी है उसे हमें बनाने के लिए इस तरीके से जो कोर्ट्स हैं उनकी फंक्शनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि सोसाइटी में ट्रस्ट तभी होगा जब किसी के साथ कोई गलत हो रहा है और उसको एडिक्वेट रेमेडी मिले। कई बार ऐसा होता है कि अगर सोसाइटी में किसी के साथ कोई क्राइम हुआ या किसी के साथ इनजस्टिस हुआ, कोई सिविल साइड में, क्रिमिनल साइड में, और उसे अप्रोप्रिएट रेमेडी अगर नहीं मिली तो सोसाइटी में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका ट्रस्ट खत्म हो जाता है। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर कोर्ट फंक्शनिंग। इसमें एक बार ऐसे पढ़ते हुए मैं छोटा सा एक कोट और मिला था। ये विंस्टन चर्चिल पहले एक प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत डिस्टर्बेंस था, इकोनॉमिक बड़ी क्राइसिस थी वहां पे। तो वो ब्रीफ ले रहे थे अपने ऑफिसर से। इसी बीच में सभी ने बताया कि बहुत कंट्री में बहुत दिक्कत है और बहुत ही इकोनॉमिक क्राइसिस और बड़ी डिस्टर्बेंस है। तो उन्होंने सीधे सीधे ये पूछा, आर द कोर्ट्स फंक्शनिंग? व्हेन टोल्ड दैट द जजेस were dispensing justice as normal, तब उन्होंने कहा कि थैंक यू, सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, इसमें किसी किस्म की कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो सारा कुछ डिपेंड करता है कोर्ट की फंक्शनिंग पे। लेकिन कोर्ट कैसे काम करती है? कोर्ट तो एविडेंस के बेसिस पे काम करती है। कोर्ट के पास में अपना कोई विजन नहीं होता, जो पार्टीज वहां एविडेंस लेके आती है उसी पे डिपेंड करती है। अब कई बार ऐसा होता है कि बहुत सरसरी तौर पे कोई सिविल साइड का मैटर आया और उसमें प्रॉपर एविडेंस नहीं है, सिग्नेचर एक्सपर्ट से रिलेटेड कोई इशू है, नहीं आने पे कोर्ट के पास में कोई और दूसरा रास्ता नहीं है कि जो एविडेंस आए हैं उसी पे डिसाइड करे। कई बार इनजस्टिस हो सकती है। इसी तरीके से जब क्रिमिनल मैटर हो तो क्रिमिनल मैटर में भी एविडेंस पे डिपेंड करता है, और एविडेंस कलेक्ट करना इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का काम होता है। और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जब एविडेंस कलेक्ट करता है तो अलग अलग तरीके के क्राइम्स होते हैं, उसमें अलग अलग उसकी अप्रोच होनी चाहिए। अगर कभी किसी कंपनी का कोई मैटर है और उससे रिलेटेड कोई क्राइम है तो उसके लिए उसे
यूपी के किस तरीके से जो उसके मैटर्स हैं उसको हैंडल करना चाहिए, उसे मालूम होना चाहिए। लेकिन नॉर्मल कोर्स में जो हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो इन सारी चीजों को से अवेयर नहीं होता। अगर कोई साइबर क्राइम हुआ है तो उसे ये समझ नहीं आता कैसे किया जाए। अगर कोई बॉडीली इंजरी का कोई क्राइम है तो कई बार वो इंजरीज को समझ नहीं पाता कि किस तरीके से ये इंजरीज आई हैं। और डॉक्टर्स के यहाँ जो रिपोर्ट्स आती है मेडिकल, वो रिपोर्ट्स ही बहुत अच्छी रिपोर्ट्स नहीं आती, बहुत एलोबरेटिव रिपोर्ट्स नहीं आती, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाता और जल्दी जल्दी चार्जशीट फाइल कर देता है। केवल इंजर्ड का बयान लिया और इंजरी लगाई और वो चार्जशीट फाइल होगी। इसमें कई बार बहुत दिक्कत होती है। ऐसे में बेस्ट रोल अब आप लोगों का है। ये जो स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ इस यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द स्टेट गवर्नमेंट कि ये बहुत अच्छा काम है। ज्यादातर इससे पहले कभी किसी को मालूम, अगर हम बात करते थे कि फॉरेंसिक का कोई बहुत अच्छा एक्सपर्ट है तो वो बाहर पढ़ने जाता है, अब्रॉड पढ़ने जाता है। लेकिन हम ये चाहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये बच्चे फर्स्ट बैच के जरूर हैं, लेकिन आने वाले समय में ये यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी हुई। क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर गोस्वामी हमेशा लगे रहते हैं, जब भी कभी उनके साथ कोई मीटिंग होती है, जितना डेडिकेटेड ये रहते हैं इसकी यूनिवर्सिटी के बारे में, उससे लगता है कि यूनिवर्सिटी आने वाले समय में बहुत आगे जाएगी। क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होता, ऐसे कई मैटर्स हमने अपने प्रैक्टिस पीरियड में भी देखे हैं और इधर जज होने के बाद भी हम देखते हैं। एक ऐसा मैटर था कि जिसमें अभी हमने अपने सीनियर जज साहब से भी डिस्कस किया कि 2004 में एक डावरी डेथ में 304 बी और 201 का एक केस रजिस्टर हुआ। मैरिज के 20 दिन के बाद ही एक लेडी अपने घर से गायब हो गई। एफआईआर लिखाई गई कि उसके घर वालों ने उसको मार के उसकी जो एविडेंसेस थे वो सब रिमूव कर दिए। ट्रायल हुआ, उसमें वो ट्रायल स्टार्ट हुआ, उससे पहले जब पूरे घर के 7 लोगों को अरेस्ट किया गया, उसमें 5 लोगों की बेल हो गई, हस्बैंड और फादर इन लॉ की बेल नहीं हुई। अब यहाँ पे रोल बहुत इंपॉर्टेंट था आप जैसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का, लेकिन क्योंकि वहां इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अपने आप इन्वेस्टिगेशन किया, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की कोई मदद नहीं ली, कहीं कोई ऐसा एविडेंस नहीं कलेक्ट किया, तो सरसरी तौर पे विवेचना हुई और चार्जशीट फाइल हो गई। 5 की बेल हो गई, 2 हस्बैंड और फादर इन लॉ की बेल नहीं हुई। ट्रायल हुआ, 2007 में कन्विक्शन हो गया। उस कन्विक्शन 7 लोगों का कन्विक्शन हुआ। हस्बैंड और फादर इन लॉ को उसमें पनिशमेंट हुआ था 10 साल की, वो सब बंद हो गए। फिर 2009 में उन बाकी लोगों की बेल हो गई, फादर इन लॉ और हस्बैंड की फिर भी बेल नहीं हुई। 2011 में ऑल ऑफ सडन गांव में एक लेटर आया, प्रधान वो पुलिस का सिपाही लेकर के आया वेरिफिकेशन के लिए उस लेडी के। जब वो लेटर लेकर के प्रधान उनके घर वालों के पास गया और उसके बाद फिर लॉयर के पास लेकर के आए, तो ये मालूम हुआ कि ये कोई अपॉइंटमेंट से रिलेटेड वेरिफिकेशन का कोई डॉक्यूमेंट है, गांव में आया हुआ है कि वेदर शी इज रेजिडेंट ऑफ दैट विलेज और नॉट। तो उसको जब लॉयर ने देखा, देख करके एक एप्लीकेशन लगाई और गवर्नमेंट से वो कोर्ट ने एक ऑर्डर किया 2011 में, आपके डीजी यूपी और डीजी पंजाब को डायरेक्शन दिया कि उसकी प्रेजेंस यहाँ प्रिक्योर कराएं। जब कोर्ट में वो लेडी आई तो उसने बताया कि 20 दिन हम इनके यहाँ शादी होने के बाद 20 दिन रहे थे, लेकिन पंजाब में एक लड़का काम करता था, वो आया हुआ था उसी गांव का, शादी में शामिल हुआ और जिससे मेरी शादी हुई थी वो हमें पसंद नहीं थी, उनके साथ वो चली गई और उसके 3 बच्चे हुए और उसकी डेथ हो गई। ही वॉज द गार्डनर, वहां माली था। तो अब माली की पोस्ट पे कंपल्सनेट अपॉइंटमेंट के लिए उस लेडी ने अप्लाई किया। जब वहां अप्लाई किया गया तो उसका जो एड्रेस था, नेटिव प्लेस था, वहां से वेरिफिकेशन होने के लिए वो लेटर आया। फिर जब यहाँ पे पुलिस ने कोर्ट के सामने उसको पेश किया तो हाई कोर्ट में तो उसका एविडेंस डायरेक्ट नहीं लिया जाता, नॉर्मल कोर्ट्स में ले सकते हैं लेकिन नहीं लिया गया। फिर एडिशनल एविडेंस के लिए ट्रायल कोर्ट में फाइल भेजी गई, उस लेडी का एडिशनल एविडेंस हुआ और 2011 में उन 2 लोगों की बेल हुई और उसके बाद फिर 2018 में वो अपील अलाउ हुई। तो एक तो इस तरीके से अगर इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है आने वाले समय में, आप जैसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, जैसे अभी डॉक्टर गोस्वामी ने बताया कि नेक्स्ट सेशन से वो बहुत जल्दी ही ये बीएससी फॉरेंसिक साइंस और एलएलबी का भी कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा कोर्स स्टार्ट करते हैं तो आप में से बहुत सारे जजेज हो सकते हैं, बहुत सारे लॉयर्स होंगे
जो इस तरीके के जो इम्पेडिमेंट्स हैं वो उससे हमेशा सिटीजन्स को बचाएंगे, दोनों तरफ से, एक्यूज के लिए भी और विक्टिम के लिए। और अभी जैसे 304 के बारे में बात की गई कि ये कोर्ट की जिम्मेदारी है कि एक्यूज को प्रॉपर और लीगल असिस्टेंस दी जाए। ऐसा नहीं है जैसे अभी कहा कि पुअर असिस्टेंस नहीं होना चाहिए, इस पे रिपीटेड जजमेंट्स है। यहाँ इस हाई कोर्ट के भी कई जजमेंट्स है, अगर उसको प्रॉपर एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी और लॉयर ऐसा नहीं दिया गया कि जो एक्सपर्ट हो उस ट्रायल का, तो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट तो वो सेटिसाइड करके दोबारा भेजा गया कि इसको एडिक्वेट एक प्रॉपर लीगल असिस्टेंस के लिए लॉयर इंगेज कराया जाए। और उसके बाद फिर ये कोर्ट की जिम्मेदारी है, कोर्ट ये देखे कि एक्यूज के साथ साथ कोई विक्टिम को इनजस्टिस ना हो। ऐसे में सारा रोल जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का होता है। आजकल सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है इसमें डिजिटल और साइबर क्राइम्स में। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जो मेंटेन हो रहे हैं, उस रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में इंटरपोलेशन की आजकल सारा रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो रहा है। डिजिटलाइजेशन में वहां इंटरपोलेशन कर देते हैं। अब जब आप उसकी कॉपी निकालेंगे तो उस खाते का मालूम होगा ओनर बदल गया, ओनर बदल गया तो सिर्फ खतौनी के बेसिस पे ही सारी प्रॉपर्टी की जितनी भी इस तरीके के एग्रीकल्चर या जो भी लैंडेड प्रॉपर्टी है उसकी डील होती है। जब अगर उसी के बेसिस पे डील होती है तो ये वो जिसके नाम जमीन है वो परेशान है, वो मालूम हो रहा है कि अब तो जमीन किसी दूसरे के नाम आ गई है। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जब भी कॉपी लेते हैं वही आ रहा। ये सिर्फ और सिर्फ साइबर एक्सपर्ट्स और आप जैसे जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वही उन्हीं से वही इसको डील कर सकते हैं और उसको निजात दिला सकते हैं। कोर्ट के सामने अगर सही फैक्ट्स आएंगे तभी कोर्ट सही जजमेंट कर सकती है। हमें ऐसी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये बच्चे यहाँ स्टेट का तो नाम रोशन करेंगे ही और आगे भी जाएंगे। और इन बच्चों की डिमांड वर्ल्ड लेवल पे है, क्योंकि लॉ तो अगर करेंगे आप सिर्फ कंट्री के लिए, लेकिन फॉरेंसिक साइंस जो है वो वर्ल्ड वाइड एक जैसी है। 2004 में एक मर्डर हुआ था एक 16 साल की लड़की का, ये साउथ इंग्लैंड में हुआ था, साउथ हैम्पटन में, और उसकी इन्वेस्टिगेशन चलती रही। 2007 में जो एक्यूज था वो दार्जिलिंग के पास अरेस्ट हुआ, सिर्फ साइबर वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से। तो आने वाले समय में सिर्फ आप लोगों का ही टाइम है। और केवल ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जितने भी इस तरीके के डिस्प्यूट्स हैं, जब भी इससे पहले जितने एक्सपर्ट्स थे जो स्पीकर्स, उन्होंने बताया कि वो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ क्रिमिनोलॉजी में ही, और बहुत सारी ऐसी फर्म्स है, बैंक्स आपको एंगेज करेंगे और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है आपको एंगेज करेंगे, साइबर सिक्योरिटी के लिए आपको एंगेज किया जाएगा। हमेशा आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए और ये सोचिए कि हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारे नेशन को कितना हम स्ट्रांग करें। कभी भी कहीं भी रहें, दुनिया के किसी भी कोने में, आप हमेशा अपने नेशन के लिए काम करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir, for inspiring us with your words of wisdom. Honorable Justice A.R. Masoodi is a senior judge at Lucknow Bench, Allahabad High Court. A law graduate from Lucknow University, Honorable Justice Masoodi has an extensive experience of approx 26 years as an advocate at many high courts and tribunals. Honorable Justice Masoodi became a judge in February 2016. वर्तमान समय में आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में सीनियर जज के पद पर सुशोभित हैं। एक राज की बात है, मुंबई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर D.K. उपाध्याय आपको भ्राता लक्ष्मण कहकर संबोधित करते हैं, जो कि आपके लिए, हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है। अब मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारकर अपने ज्ञान से हम सबका मार्गदर्शन करें। I have this heavy book of thoughts with me. लेकिन ये सब बातें, इससे मैं आपको और ज्यादा थकाऊंगा नहीं।
आज 74वां संविधान दिवस है। चौहत्तरवें संविधान दिवस पे जिस वक्त इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ तो कुछ प्रस्तावना को, संविधान की प्रस्तावना को जिस वक्त हम लोग उसकी शपथ ले रहे थे और हिंदी में ले रहे थे और हमारी जुबान लड़खड़ा रही थी, थोड़ा सा मुझे उसके बारे में थोड़ी चिंता हुई। दिल में ये लगा कि शायद जिस भाषा में अपने संविधान की प्रस्तावना को हम जिसकी शपथ ले रहे हैं उस भाषा को हम गहराई से नहीं जानते, समझते अभी भी नहीं है। तो आभास हुआ कि हमको निश्चित रूप से संविधान को समझने में कठिनाई होती होगी। उसके पश्चात जिस वक्त स्पीकर्स एक के बाद दूसरे आते रहे, बहुत अच्छे स्पीकर्स हिंदी में भी बोलने वाले मिले, अंग्रेजी में भी लोगों ने अच्छी स्पीचेस दी। हमारे यहां आने का जो अर्थ संविधान के दिवस पे था उसको सुशोभित किया। यह भी एक सर्विस है कि संविधान दिवस पे हम ये चिंता करें कि हम क्या हैं, हमारा स्वरूप क्या है, संविधान क्या है। हमारा संविधान हमारी मान्यताओं के अनुसार ये वो डॉक्यूमेंट है, ये वो गीता है, ये वो कुरान है, ये वो बाइबल है जो हमें एक छत्र छाया देती है सबको सामान्य रूप से। इस संविधान में हम सब की निजी और सामूहिक परवरिश छुपी हुई है। This governs us as a whole and in an inclusive manner. And that is what the text of this constitution is about. इस प्रकार से जब हम इसको समझते हैं और इसके अनुसार जिस वक्त हम विधि का निर्माण करते हैं तो हम जितनी भी पॉपुलेशन हमारी, चाहे वो 140 करोड़ है या 130 करोड़ है, हम ये समझते हैं कि वो हमारे नागरिक हैं, वो भारत के नागरिक हैं, वो इस देश के निर्माता हैं और निस्संदेह हर व्यक्ति उसमें अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इस देश की उन्नति के लिए समर्पित है। हम किसी पे शक नहीं करते, हम किसी पे शुबा नहीं करते, हम किसी को अच्छा नहीं कहते, हम किसी को बुरा नहीं कहते। हम ये समझते हैं कि वो अपनी क्षमता के अनुसार इस देश की उन्नति के लिए यहां पैदा हुआ है, उसको रहने का हक है, उसको आगे बढ़ने का हक है और उसको वो सब सुविधाएं पाने का हक है जो एक आम नागरिक को है। ये हमारी धारणा है। एंड दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। इस कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट में
इसकी इस धारा के अनुसार प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस हर एक के लिए है। हम किसी को तब तक अपराधी नहीं मानते जब तक कि हमारे पास कोई आधार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के कोई ऐसा डाउट, ऐसा सस्पिशन पैदा न करे कि जिसको हम क्लासिफाई करने के लिए आधार बनाए। तो इसी कारण आर्टिकल 21 जो पार्ट 3 है वो ये कहता है कि जीवन का हर एक को संपूर्ण अधिकार है, लेकिन यदि उसको दोषी मानना है तो बिना आप कानूनी प्रक्रिया को अपनाए उसको दोषी नहीं मान सकते। कितना अच्छा होता कि हमारी पूरी पॉपुलेशन, पूरी जनसंख्या नियम और कानून का पालन करती, हम एक खुशहाल देश होते, हम एक दूसरे से मिलके चलते, ज्यादा पैसे वाला कम पैसे वाले से मिश्रित होके चलता, वो उसके ऊपर उसका ख्याल रखता, जो कम पैसे वाला है वो अपना उपयोग ज्यादा पैसे वाले के घर में पाता, तो शायद इस शेयरिंग से हम एक बेहतर देश, एक बेहतर कल्पना में जी सकते थे। लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है कि कभी कभी इसके ऊपर स्वार्थ तारी हो जाता है, कभी कभी ये आधार, ये मूल्य इनको ये भूल जाता है। इससे बड़ी क्या मिसाल हो सकती है कि एक मां से 2 बच्चे पैदा होने वाले वो संपत्ति के लिए एक दूसरे के दुश्मन हो जाते। तो ये मान लिया जाता है कि मनुष्य के व्यवहार में एक ऐसा भी एलिमेंट है जो उसको कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट करता है, एंड द बिहेवियर ऑफ मैन कम्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। ये जो लॉ का कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, इससे 2 प्रकार के डिस्प्यूट्स पैदा हो जाते हैं। इससे सिविल डिस्प्यूट्स पैदा हो जाते हैं और इससे क्रिमिनल डिस्प्यूट्स भी पैदा हो जाते हैं। सिविल डिस्प्यूट्स भी आज जिस वक्त हम इसका आंकलन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा समाज, हमारा स्टेट बहुत हद तक लाखों की तादाद में सिविल डिस्प्यूट्स हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे समाज में लाखों बीमार हैं। A person in conflict with law, insofar as his civil rights are concerned, can be treated to be a patient. His existence is none other than that. लेकिन प्रश्न यह है, वो हमारा हिस्सा है, हमारा प्रयास उसके लिए क्या है, संवैधानिक दृष्टि से क्या है, कानून की दृष्टि से क्या है। इसी प्रकार जिस वक्त हम क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं लाखों केसेस, बड़े बड़े अपराध हैं, अपराध कत्ल के हैं, अपराध चोरी के हैं, अपराध करप्शन के हैं, अपराध प्रॉपर्टी को हड़पने के हैं। ये जो समस्या हमारे इस समाज में, जिसको बेनिफिट ऑफ इनोसेंस का लाभ प्राप्त है, तो जरूरत पड़ती है कि हम किसी एक ऐसे फोरम का गठन करें जिस फोरम से सामाजिक मान्यता के अनुसार उनको हर प्रकार से हम वापस ऐसा नागरिक बनाने का प्रयास करें जो एक साधारण नागरिक है, जो एक लॉ अबाइडिंग नागरिक। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, संविधान के इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए भी और क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए हर
स्तर पे कोर्ट्स बनाए। ये कोर्ट्स की हायरार्की मैं आपको इस पे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सब आप जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे की अदालतों तक आप जानते हैं कि हमारे पास अदालतें हैं। लेकिन अदालतें हमारे पास एक बड़ा ढांचा है। वो मात्र जजों के या एक बिल्डिंग के या कुछ कर्मचारियों के या मात्र अधिवक्ताओं के आधार पे काम नहीं कर सकते। ये एक डिपेंडेंट ऑर्गन है। The three organs of the state which we have conceived for running the affairs of the state are interdependent. ये जो एक दूसरे पे निर्भरता है, जुडिशरी को जब भी आप देखेंगे, जुडिशरी की निर्भरता जो है वो बाकी आधारों पे है, वो कार्यपालिका पे है, लेजिस्लेचर पे है। आज हमारे सामने जो आपके लिए उद्देश्य है कॉन्स्टिट्यूशनल डे पे, जिसको मैं आपके सामने उजागर करना चाहता हूं, बहुत साल पहले मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं आज यहां आपके सामने बोल रहा हूं। आई डिडंट नो दैट वन डे आई विल बी स्पीकिंग टू यू, आई विल बी हियर एंड यू विल बी लिसनिंग टू मी। तो पहली बात ये आप जान लीजिए, आपका भविष्य कुछ हो सकता, वो हम लोग जो आपसे आज वार्तालाप किए इनसे भी ऊंचा हो सकता। इसके लिए आप इस चीज का भय नहीं रखिएगा कि यदि आप मेहनत करेंगे, यदि आप अपने लक्ष्य निर्धारित करेंगे, दिशा अपनी एक तय कर लेंगे, तो आप अपने जीवन में किसी उच्च स्तर की अचीवमेंट पे नहीं पहुंच पाएंगे। ये तो अपने मन से बात निकाल दीजिए, क्योंकि यदि हम लोग यहां आपके सामने आज हो सकते हैं, आप कल के हमारे लीडर हैं, रहबर हैं, और आप कल के हमारे जज हैं और ऑफिसर। प्रश्न ये है कि हमको करना क्या। फॉरेंसिक एड, आज भी इसको एविडेंस की डिग्री नहीं मिली। हम ये नहीं कहते हैं कि ये एविडेंस। क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में पहली बात तो यह है कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, इस स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ को पहुंचने के लिए हमको हर प्रकार का वो प्रयास करना है कि जब हम किसी को दोषी ठहराएं, उसमें यह संदेह न रहे कि इसमें किसी प्रकार की भी फैसले में लोच। यह एक एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, यह फैक्ट और रीजन बेस्ड ही नहीं होना चाहिए मात्र। अंतर है फैक्ट में, अंतर है रीजन में, और अंतर है एविडेंस में। जब हम एविडेंस की बात करते हैं तो एविडेंस भी तीन प्रकार की होती है। एक एविडेंस वो एविडेंस होती है जिसको हम होली रिलायबल एविडेंस कहते हैं। एक आदमी ने एक अपराध को सड़क पे होते हुए देखा और वो उस अपराध का गवाह बन गया। अब किसी के लिए भी छूट है कि उसकी सूचना उस अपराध की वो नियर बाय पुलिस स्टेशन पे दे दे। पुलिस ने एक अपराध को पंजीकृत कर दिया। पंजीकृत करने के पश्चात वो इन्वेस्टिगेशन में चल पड़े। चलते चलते उनको एक गवाही इस व्यक्ति की मिल गई जो अपने आप को चश्मदीद गवाह कहता है। ये एक डायरेक्ट एविडेंस है। इसकी क्रेडिबिलिटी जिस वक्त ये व्यक्ति कहेगा कोर्ट में कि मैंने इस व्यक्ति को इस व्यक्ति के अगेंस्ट ये क्राइम करते देखा है,
तो एक इन्फॉर्मेंट को इसका कोई लाभ नहीं है। यह स्टेट को एक सूचना है कि वहां व्यक्ति ने यह अपराध कारित किया है। दायित्व तो स्टेट का है कि उस अपराधी को वो सजा दिलाए। स्टेट मात्र यह सुन के कि इन्वेस्टिगेटिंग अफसर ने यह कह दिया कि इस व्यक्ति ने हमसे कहा कि इसने अपराध कारित किया है, स्टेट नहीं कर सकती, क्योंकि यह 161 का बयान है। 161 के बयान इन्वेस्टिगेटिंग अफसर कलेक्ट तो करते हैं, लेकिन उनकी एडमिसिबिलिटी जब तक कि कोर्ट की स्क्रूटनी को पार नहीं करती तब तक उसको एडमिसिबल नहीं माना। बहरहाल इन्वेस्टिगेटिंग अफसर इस व्यक्ति के पास आ गया जिस व्यक्ति ने यह अपराध होते देखा। अब इस एक व्यक्ति की बात को कोर्ट सही मानेगा, होली रिलायबल मानेगा, पार्टली रिलायबल मानेगा या अनरिलायबल मानेगा, यह उस इन्वेस्टिगेटिंग अफसर के लिए चुनौती हो जाती है जो इन्वेस्टिगेशन के एरिना में स्टेप इन करने के बाद इस व्यक्ति को अपनी केस डायरी में अंकित करता है, चार्जशीट में अंकित करता है कि यह गवाह है इस अपराध को साबित करने का। यह उसके लिए चुनौती है। इन्वेस्टिगेटिंग अफसर के लिए एक यह चुनौती है कि उसने जिस एविडेंस को रिलाई किया, क्या वो सही एविडेंस है या नहीं है। अगर वो उस एविडेंस को रिलायबल मानते हुए कोर्ट कन्विक्ट करता है तो उसकी एक प्रक्रिया, कोर्ट कन्विक्ट करने से पहले उस अपराधी को भी अवसर देता है। उस अपराधी के पास इस गवाही का एकमात्र डिफेंस यह होता है कि वो उसको क्रॉस एग्जामिन करता है। अब क्रॉस एग्जामिनेशन में इस व्यक्ति से यह निकालना है क्या वो वहां पे एक नेचुरल विटनेस था, क्या वो वहां पे एक चांस विटनेस था, क्या वो वहां पे एक प्लांटेड विटनेस था। ये बहुत सारे डायमेंशन एविडेंस के उभर के निकल आते हैं। गवाह एक है, डिफेंस की भी अपॉर्चुनिटी अक्यूज को प्राप्त है, साबित करने का अवसर इन्वेस्टिगेशन को पूरा मुहैया है। लेकिन बात बिल्कुल साफ होने के बावजूद भी अगर इतना मान लिया जाए कि इन्वेस्टिगेटिंग अफसर ने इससे अधिक कुछ भी नहीं किया, उसने देखा कि एक गवाह वहां पे है, उसने इसको समझा पर्याप्त है, उसने कहा इन्वेस्टिगेटिंग बंद हो जानी चाहिए, उसने चार्जशीट सबमिट की और किसी चीज को ना साइट प्लान देखा, न बाकी सर्कमस्टेंसेस देखे, न उस कौन सा असलाह इस्तेमाल हुआ ना वो देखा, तो ये इन्वेस्टिगेशन के ऊपर इस गवाही को करबरेट करने के लिए जो एड लेने होते हैं वो मात्र फिर उस एक गवाह के ऊपर निर्भर अपनी प्रोसिक्यूशन का केस नहीं करता। ही कलेक्ट्स मोर एविडेंस एंड दिस एडिशनल एविडेंस corroborates the direct evidence। तो हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस भी आती है, हमारे पास corroborative एविडेंसेस भी आती है। इस प्रकार अपराध ने, अपराध के इतिहास में समाज को तो बीमार किया ही है, लेकिन अब अदालतों पे आके इतना बड़ा बोझ आ बैठा है कि हम जो न्यायालय के जज हैं वो किस केस को कितनी पेशेंस से, कितनी बारीकी से उसके अंदर जाएं, इसके लिए हमारे पास बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई। अगर हम ये दोष इन्वेस्टिगेशन पे डालें तो मैं आज थोड़ा ये कहने से संकोच करूंगा
क्योंकि रेणुका मिश्रा जी ने जिस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बात की है, और ये अगर एक पुलिस ऑफिसर ने ये बात की है, तो मैं ये कह सकता हूं कि संविधान का वो दायित्व जो हमारी पुलिस के ऊपर एज एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो अभी टिका हुआ है, उन मर्यादाओं के ऊपर टिका हुआ है जिन मर्यादाओं का उन्होंने हवाला दिया। आई एम हैप्पी टू गैदर इट फ्रॉम द माउथ ऑफ ए पुलिस ऑफिसर that she has expressed a very serious concern about the genuineness of evidence, about upgrading. She also spoke that the investigating officers in large number have been subjected to training. This is a welcome step on behalf of the state, and certainly this will go a long way to aid the courts of law to administer justice promptly and expeditiously. हमारी अदालतों के सामने अगर एक प्रॉपरली इन्वेस्टिगेटेड केस होता है, ये मैं बिना किसी पक्षपात के आपसे कह सकता हूं कि हमारे जुडिशियल ऑफिसर जो अपना जीवन इसमें समर्पित करते हैं, वो यही समझने की कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या ऐसा प्रूफ, ऐसे क्लूज एक अपराध को कारित करने के लिए कलेक्ट हुए हैं, जिससे कि हम डायरेक्ट एविडेंस को corroborative एविडेंस से सपोर्ट कर दें। कभी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस होता है, corroboration का महत्व बढ़ जाता है, तो उस क्षेत्र में अब एक डायमेंशन उसका फॉरेंसिक साइंस भी है। फॉरेंसिक साइंस का जिस वक्त आविष्कार या किसी ने कंसेप्चुअलाइज किया, यह अपने आप में इतना बड़ा एक नमूना था कि अपने आप में एक कोर्ट की भांति एक फोरम था। अगर फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने यह कह दिया कि इस तरीके की बात है, तो उसकी बात को नकारा नहीं जाता। लेकिन क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम होती रही, इस वजह से अभी तक ये एड ही है, एविडेंस ओपिनियन को नहीं उस स्तर तक माना गया। आपके सामने जो चुनौती है, मैं जिस वक्त यंगस्टर्स को यहां देख रहा हूं, मैं ये समझ सकता हूं कि कल इनमें से कुछ डिफेंस की तरफ से खड़े होंगे, कल इनमें से कुछ प्रोसिक्यूशन की तरफ से खड़े होंगे। हम दो रूप में ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से तो देखते ही हैं आपको। अधिकांश फॉरेंसिक एरिया ऐसा है जिसमें प्रोसिक्यूशन तो उसको रिलाई करता है ओपिनियन को, लेकिन डिफेंस वाले को यह पता नहीं होता कि इसके लूप होल्स क्या है। ब्रॉडली रूल्स बने हुए हैं कि सैंपल ऐसे कलेक्ट होगा, बस उस तक ही, उस हद तक ही आपका क्रॉस एग्जामिनेशन कि ये इतने घंटे पहले हुआ, ये यहां पे सील हुआ, ये यहां पे प्रॉपर एटमॉस्फेयर में या टेम्परेचर की कंडीशंस में प्रिजर्व होके वहां पहुंचा, फिर इसकी रिपोर्ट कितने दिनों में आई। हमारी लैब रिपोर्ट्स दे आर बिहाइंड ईयर्स एंड आई विल नॉट से मंथ्स। आज की जो फॉरेंसिक जांच हमारे पास क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में रिलाई हो रही है, it's lacking in many ways. I must also say I have visited many of the forensic labs and the institutes. I have found dearth of staff. Experts are not available. Scientists are not available. I do not know what this education is going about. अगर ये साइंटिफिक एजुकेशन है, मैं समझता हूं इससे बड़ी चुनौती को उसका पूरा करने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए और कोई स्टेप नहीं हो सकता कि ऐसा इंस्टीट्यूट हमारे लखनऊ में स्थापित हो गया। आप तमाम से मेरी यही उम्मीद है कि देखिए, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन,
हर एक के मन में एक बात की जागृति, संविधान की उस ओथ को दृष्टिगत रखते हुए सामने होनी चाहिए। कहीं पे भी अन्याय अगर होता है, ये न्याय को हर जगह चुनौती देता है। ये हमें स्वीकार नहीं है एज ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन। मैं अक्सर कहता हूं कि हमारी पुलिस की स्ट्रेंथ कितनी बढ़ाएंगे, हम जजेस की स्ट्रेंथ कितनी बढ़ाएंगे, हमको वो मोड्स भी इवॉल्व करने होंगे कि हम एक लॉ अबाइडिंग सोसाइटी का वो ऑब्जेक्ट अचीव कर सकें, एम्प्लॉयमेंट उनको उपलब्ध हो, हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो, ताकि लॉ की ओबीडियंस एज ए मैटर ऑफ बिहेवियर बन जाए लोगों का। अभी कुछ दिन पहले अजीब सी एक बात मेरे संज्ञान में आई। हमारे यहां एक कर्मचारी क्लास 4 एम्प्लॉय था। हमने बड़ा एक हाईकोर्ट की मैसिव बिल्डिंग बनाई हुई है, उसमें 2 फ्लोर काम कर रहे हैं, एक आध फ्लोर खाली है। इंस्पेक्शन हुआ तो उसके टैप्स जो बाथरूम में लगे थे वो मिसिंग थे। तो हम लोगों ने वहां स्थापित कर रखा है सीसीटीवी। आदमी पकड़ में आ गया। पकड़ में जब आ गया तो क्या करें, हमारे पास बात आई। मेरा पहले ध्यान यह गया क्लास 4 एम्प्लॉय है, ऐसी उन्होंने हरकत की है इस संस्था में आते जहां से उसको एक जीवन का सहारा मिल रहा है, क्यों ऐसा हुआ। मैंने पूछवाया क्या जो इसका एम्प्लॉयर है उसने इसको महीने की तनख्वाह दी है, क्या इसके घर में ऐसा तो नहीं कोई बीमार हो गया हो, क्या ऐसा तो नहीं है कि ये कोई और परिस्थिति से गुजर रहा हो। ये तो मालूम हो गया कि तनख्वाह मिल रही थी, लेकिन कुछ बीमारी के संकेत घर में थे। हमने पुलिस ऑफिसर को बुलाया। मैंने कहा कि इसकी कंप्लेंट तो हम कर देंगे, क्योंकि इसकी ऐसा आदत हम नहीं, किसी को भी कैनॉट अलाउ एनीबॉडी टू कमिट सच एन एक्ट विद इन द कैंपस, पर्टिकुलरली व्हेन ही इज एन एम्प्लॉय। लेकिन आप जिस वक्त इन्वेस्टिगेशन करें तो इस पूरी चीज को जो है थोड़ा सा ध्यान में रखें। तो इन्वेस्टिगेशन अफसर के मन में तो कभी यह नहीं आएगा कि इसके घर में खाना बन रहा है या नहीं, इसका बच्चा बीमार है या नहीं, लेकिन हमें इन्वेस्टिगेशन कुछ इस पैरामीटर के भी, एक मानवता के अनुसार भी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन का एक डायमेंशन होना जरूरी। कहीं कहीं हम डिफेंस में देखते हैं कि डिफेंस में पता ही नहीं लगता कि डिफेंस में हम कहें क्या, हम एक्सपर्ट ओपिनियन को कैसे एनालाइज करें, कोर्ट की स्क्रूटनी में कैसे लाएं, क्या इसमें प्रश्न ऐसे हो सकते हैं। ये जो हमारा साइंटिफिक एडवांसमेंट है, ये आम आदमी के अंदर इतना प्रवेश नहीं किया है। मोबाइल अब सब रखते हैं, मैं भी रखता हूं। मुझे आज तक ये पता नहीं चला, कहीं का मैसेज कहीं हो जाता, मेरे पास उसकी एक बस डिक्शनरी एक ऐसी चीज है जिससे मैं थोड़ा सा आई गेट वैल्यूएबली equipped, but for rest of the things, all that what is in hand is time taking. जब वक्त 1 घंटा जाया हो जाता है तो फिर हम एहसास करते हैं फला को हमने ये बोला, फला, दिस वॉज एन अनप्रोडक्टिव टॉक। बहुत वक्त ऐसा होता है जो नष्ट करने के बाद एहसास होता है कि तो टाइम वेस्ट कर दिया। तो बहुत सारी चीजें इसमें। अच्छा, बच्चों को देखिए, बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल हो गई हैं, बाकी चीजें हो गई हैं। अब इसी प्रकार से अपराध के लिए भी इसकी बड़ी एक सहूलत हो गई। जो ट्रेवल नहीं कर पा रही थी बात पहले बिना चले, वो एक जगह बैठ के ट्रेवल करने लग गई। तो साइंटिफिक एडवांसमेंट से बहुत सारे चैलेंजेस भी हमारे सामने आ गए। आई होप दिस इंस्टीट्यूट केटर्स दैट इंटरेस्ट ऑफ द सिस्टम and it comes out with all the help which is necessary for making the systems smooth and profitably, so that the people at large are happy and they have a trust and faith in the administration as a whole.
ये नहीं है कि हम कहें कि हमारे पास मुकदमे इंस्टीट्यूट हो रहे हैं, हमारी आस्था तो बनी हुई है। ये इन्वेस्टिगेशन को भी चिंता करने की जरूरत है। ये उन लोगों को भी चिंता करने की जरूरत है जिनको बाकी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ये मेडिकल क्षेत्र में भी होना चाहिए। ये एक ओवरऑल डेवलपमेंट है जिससे एक समाज का एक कंट्री का एक वो बनता है, एक बेस बनता है, रेटिंग का बेस बनता है। तो ओवरऑल आज के संविधान दिवस पर इस बात की अगर हमने थोड़ी सी भी इंट्रोस्पेक्शन की कि हम अपनी बीमारियों को, जो सामाजिक बीमारियां हैं, इनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। जिस किसी ने भी यहां आके, जिस किसी ने भी यहां सुन के, जिस किसी ने भी यहां बोल के किसी भी चिंता का जो भी चिंता उसने व्यक्त की, आज के दिन के लिए उसने पूरी जस्टिस की। आप सब यहां इत्मीनान से पेशेंटली हम सब लोगों की बात सुने। आई होप यू कैरी सम आइडियाज फॉर योर एज ए फूड फॉर थॉट, एंड इन द डेज टू कम you accomplish your own ideas in a way that you come out to be the most productive part of this country. आज के इस अवसर पे मुझे कुछ शब्द बताएं बोलने के लिए यहाँ, और गोस्वामी साहब का ही इज एन academician and I thank him for inviting me to this institute, and I wish I can also be a constructive part of it in the days to come. Thank you very much. Thank you so much, sir. Your words of wisdom have left everyone. Now, I would like to call upon my fellow classmate, Atul Singh, to deliver his thoughts and aspiration on the occasion of Constitution Day. दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान हैं, जो जोड़कर सबको साथ रखे वो संविधान है। Good afternoon, honorable dignitaries on the dais, respected teachers, and my dear friends. Today, I, Atul Singh, a student of B.Sc Forensic Science, UPSIFS, stand before you not only as a student but also as an aspirant custodian of the ideals embedded in our Constitution. Indian Constitution Day holds a special significance for each of us, especially for those who are the torchbearers of truth and justice. Our Constitution isn't merely a legal document. It is a living testament to the aspiration, dreams, and resilience of a nation that values justice, liberty, equality, and fraternity. In the realm of law enforcement, the role of top police officials is paramount. Your dedication to upholding the rule of law, protecting the rights of citizens, and maintaining public order contributes significantly to the ideals enriched in our Constitution. Now, I am sure we all know that our Constitution grants us the fundamental right to free legal aid. This means that no matter who we are, where we come from, or what we have done, we have the right to access the free legal services and get a fair trial. However, the question is legal aid enough to ensure justice for all? What about forensic aid? Forensic aid ensures factual representation, validating innocence or otherwise, and guiding the course of fair legal proceeding. In India, we all know evidence holds immense weight. The collaboration between legal and forensic aid become pivotal, ensuring comprehensive access to justice for all. There should be some provisions for forensic aid as well. A boy, inspired by the character of Sherlock Holmes, saw the news published for application for admission in state's first forensic science institute. After clearing the entrance exam, as a student entering a brand new institute, the uncertainty loomed large. The novelty of being the inaugural batch stirred a mix of excitement and apprehension. Yet, as I stepped into this uncharted territory, something remarkable unfolded. On 16th August, a day after Independence Day, an invitation from the Honorable Chief Minister of our state, Sri Yogi Adityanath ji. A wave of nervous anticipation swept over me, but that encounter proved to be a defining moment. In the gracious presence of our Honorable CM, we stayed at the residence for around 3 hours.
The corridors of uncertainty vanished and started to echo with encouragement, laughter, and a shared sense of purpose. In those moments, the trepidation melted away, replaced by a profound sense of belonging. The CM's unwavering support and invested interest in our journey not only lifted our spirits, but also ignited a spark within each of us. That day etched in our memories not just as a mere interaction, but as a beacon of belief in our collective future. Moving forward, studying under the guidance of our visionary director, Dr. G.K. Goswami, with a student-centric approach has been transformative. His dedication to turning our institute into a global powerhouse inspires us daily. His openness and encouragement foster a collaborative environment where innovation thrives. We are not just students, we are partners in his dream to make this institute a world-class center of excellence. Under his guidance, our ambitions soar and our institute's potential seems boundless. In this new institute and hostel, I was surprised by the top-notch facilities. From advanced lab to inviting living space, every detail feels tailored to support our growth. It's more than a place to study and stay. It's a nurturing environment designed to inspire excellence. As a student in the field of forensic science, I am sure we all are actually aware of the responsibilities and expectations that come with this noble profession. We are the guardians of the evidence, the seekers of the truth, and the unwavering advocates for the justice. In the context of Indian Constitution Day, I wish to express the expectations of a forensic student. First and foremost, we look up to our institution to equip us with the latest knowledge and technologies. We thrive for a deep sense of responsibilities toward our role in criminal justice system, emphasizing the need of impartiality and accuracy in our analysis. Furthermore, as a student, we wish to avail opportunities for practical experiences and real-world cases. The Constitution places an immense responsibility on forensic evidence to be credible and admissible in the court of law. As we all know that the Home Affairs Panel of Parliament has mandated in its report on 3 new bills, Section 176(3) of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023, a compulsory examination of crime scene in those offences where prescribed punishment is of 7 years or more. Practical training not only sharpens our skill but also prepare us for the challenges that lie ahead in our careers. In one of its judgments, the Honorable Supreme Court states that it is a sound and well-established rule of law that the court is concerned with the quality and not with the quantity of evidence necessary for proving or disproving a fact. Lastly, we look upon to avail our institute's vision of collaboration and interdisciplinary learning. The complexities of modern crime require forensic scientists to work seamlessly with law enforcement, legal professionals, and other stakeholders. In conclusion, let this Constitution Day serve as a reminder that as a student of forensic science, we are the integral to the fabric of justice in our nation. Thank you, and may we, as forensic student, remain committed to pursuit of justice. Thank you so much. Thank you, Atul, for reiterating our aspiration. Now, I would like to call Satish Kumar, IPS 2013 batch, presently serving as the commandant at SDRF, to deliver the vote of thanks. Good afternoon, all of you. Respected ladies and gentlemen, as we come close to this year's Constitution Day, on behalf of Director Uttar Pradesh State Institute of Forensic Science, it gives me immense pleasure to deliver the vote of thanks to this august gathering here. My very special thanks to Chief Guest, Honorable Justice A.R. Masoodi sir, Senior Judge, Lucknow Bench, Allahabad High Court, who gave an inspirational speech on this 74th Constitution Day and guided us on law and forensics, Article 21, Part 3 of the Constitution, and to treat a person in conflict with law as a patient, not as a criminal. And the aim of our students, उद्देश्य उनके जीवन का, that you are future leaders. He also told about the standard of proof beyond reasonable doubt.
fact, reason, and evidence, three types of evidences, three types of witnesses, site plan, additional evidences, which will corroborate the direct evidences. He also told about the state of affairs of forensics and also how the advancement of technology is leading to new crimes and how we should be very well prepared for that. I also take immense pleasure in extending my sincere thanks to the guest of honor, Honorable Justice Rajiv Singh Sir, Lucknow Bench, Allahabad High Court, who had highlighted forensic aid enabling right to fair trial and legal aid with annotation from Mahabharata. How if we protect dharma, it will also protect us. How lack of knowledge and training of investigation officers hampers justice. Importance of forensic experts for the accused as well as the victims. How the digitalization interpolation is increasing the crime in the society. I would also like to express my gratitude to our Honorable Director General of Police, Srimati Renuka Mishra, IPS Ma'am, Chairperson, UP Police Recruitment and Promotion Board, and DGP Training for gracing the occasion with her kind words and inspiring students with her wisdom. I would like to thank our Honorable Secretary Home, Shri A.V. Rajamouli Sir, IAS, for giving valuable time out of his extremely busy schedule and connecting forensics with our culture and Mahabharata. I am very glad to extend my sincere thanks to Professor Anup Surendranath, National Law University, Delhi, keynote speaker, for guiding us on the topic forensic aid, enabling right to fair trial and legal aid. He is leading the pro bono defense of death row prisoners, leading to 20 acquittals. He told us about Babu Rao versus State of Maharashtra, Section 45 of Indian Evidence Act, Anokhilal versus State of Madhya Pradesh, exemption under Section 293 CRPC, right of accused to cross-examine the experts. He reminded me of Brian Stevenson of Just Mercy. I would like to thank Mr. Upendra Giri, CEO and founder of Build Global Inc. USA, for gracing us on this occasion and giving us an inspirational speech and guiding our UPSIFS students, especially from the rural background, to become CEOs in the future. I extend my heartfelt thanks to one and all who have helped to make this function a grand success. I have to specifically mention the contributions made by Dr. Sapna Sharma, faculty UPSIFS, Mr. Chiranjeev Mukherjee, Additional Superintendent of Police UPSIFS, in preparing the stage decoration, in all the graphical design related works, and preparing students for the function. I am very happy to extend my sincere thanks to Dr. Savesachi, Assistant Professor, Department of Applied Science and Humanities, University of Lucknow, who had constantly giving advices and also did the Master of Ceremonies to give color to this function. I am very thankful to Professor Rajinder Singh, Dean UPSIFS, Assistant Professor Roshan Singh, Department of Cybersecurity UPSIFS, Assistant Professor Saurabh Yadav, Department of Chemistry UPSIFS, Shivani Dikshit, Faculty UPSIFS, Geetika Bajpayee, Faculty UPSIFS, for taking keen interest in making this function happen. We are very much grateful to Mr. Satish Sachan, Reserve Inspector UPSIFS, Inspector Santosh Tiwari, UPSIFS, Mr. Prabhakar Sagar, SIMT UPSIFS, and the team of office bearers for their continuous day and night dream of conducting this function in a grand manner. All the ideas of our honorable guests would help UPSIFS in rising to greater heights. Ladies and gentlemen, as we come to the close of this function, I express our deep sense of gratitude and heartfelt thanks to Director, Uttar Pradesh State Institute of Forensic Science, Dr. G.K. Goswami Sir, IPS, who gave the courage to dream and the passion to make this Constitution Day function happen in the best manner. So thank you all. I must specifically mention the hard work done by our students, Adrika Yadav, Shaurveer Singh, and Atul Singh, for the management of this event successfully. Last but not the least, my thanks to all the dignitaries, senior officers, participants, students, UPSF staff, UPSFS officials, volunteers, visitors, media officials, and the management of the UP Police Headquarters and their catering officials. Finally, I request you all to kindly have the good lunch arranged for you in the nearby Gondrani Virangana Durgavati lounge of this building without fail. I think I have thanked everyone who had directly or indirectly helped to make this function a grand success. Thank you one and all. We warmly welcome you for the lunch arranged in this building in the adjacent building, please. Thank you very much. Thank you, sir.
It's time to close the event. Hence, I request everyone present in this hall to kindly rise for our national anthem. I request the in charge to take the guests to the lunch area, and students are required to be seated.